welcome all the dignitaries for joining us for this Eastern Region Conference. WeCare is a national industry consortium, and we have been trying to create platform for multi-stakeholders to come together and discuss the issue of plastics and upcoming phase out of single-use plastics. Uh, we care in partnership with the Policy Times. We have been making our best efforts to bring out these regional dialogues, policy dialogues, and we are blessed to have the dignitaries on the dais. Without taking much time, I would like to invite Ms. Madhulika Sharma, Chief Sustainability Officer, ITC Limited. ITC is our founding member of WeCare, one of the founding members of WeCare, and I would like to hand over the mic to Madhulika. Over to you now. Thanks, Kamal, and a very warm welcome and good morning to everyone. And on behalf, I'm truly privileged to welcome the guests on this dais. So, a very warm welcome to Mr. Akram Haq, Editor-in-Chief of Policy Times, Mrs. Sita Sahu, our Honorable Mayor from Patna Municipal Corporation, and Sri Sanjeev Vijay Varghya, Deputy Mayor, Ranchi Municipal Corporation, and Mr. Kamal Sharma, CEO of WeCare. So, as mentioned by Kamal, so ITC is a founding member of WeCare. And apart from the people on dais, we would also like to extend a very warm welcome to all the dignitaries, delegates on the digital conference of this Eastern Region conference, which is being organized under the WeCare Policy Dialogue Series. So WeCare has launched this series in February this year and has received excellent feedback from all the stakeholders. And the first of this series witnessed participation of political leadership, industry experts, regulators, and all concerned stakeholders. Because as you know, this waste management, and especially the plastic waste management, it really requires collaboration and participation from all stakeholders to ensure that the real value from the recycling gets created. And today we have been able to bring the leaders from Eastern region to discuss the plastic waste management and our efforts to phase out the single-use plastic in India. So WeCare takes pride in being a unique national industry consortium on the issue of plastic waste management, which now has got 37 brands associated with it and supporting the cause. Over the years, since 2016, since its inception, when India brought the EPR, the Extended Producer Responsibility regulations for plastic waste management, our members have been at the forefront to implement the regulations with all their commitments of a better management of plastic waste in the country. While regulatory compliance is managed by individual members, WeCare as a consortium is working on common agenda of good in the plastic waste ecosystem in the country. And as I mentioned earlier, it's very important to create and have all the participants on the same level so that we can actually create value out of this waste. And over last 6 years of collective experience of our members, we would like to mention that all stakeholders have their responsibilities towards the generated plastic, and all we need to is gear up and scale up the efforts. So we are actually very, very delighted to have received such a tremendous response to our call for this series, and we are blessed to have the presence of esteemed dignitaries in the session today. India, as you know, as a country, is a key for the success of the UN Sustainable Development Goals. And we have recently shown the world that India can actually lead with its unique winning strategies, whether it was the COVID health, COVID management and the economic impacts, or as a country, we have continuously innovated and we have been finding our own unique solutions, which meets the expectation of all the stakeholders. And while the government is assisting the states to develop adequate waste management infrastructure for solid and plastic waste management through the flagship Swachh Bharat Abhiyan, the EPR regulations have also been notified earlier this month, and these regulations are now putting more focus on creating value and recycling of the plastic. And they have not only placed considerable targets for the industry, but also would require all stakeholders to join hand and leverage each other's strength.
As you are aware that ITC is one of the largest FMCG players in the country, and sustainable plastic waste management is at the core of our Sustainability 2.0 strategy. Just last year, we have just concluded our last financial year. We have sustainably managed more than 54,000 metric tons of plastic waste across 35 states and union territories. And this has exceeded the amount of plastic that we actually consumed. And hence, we are very proud to say that for the first time, we are a plastic neutral company. So ITC actually takes a 360-degree holistic approach towards the issue, and we manage one of the largest solid waste management programs in the country. We have our own program of well-being, creating of well-being out of waste called WOW, that spans large cities like Bangalore, Hyderabad, and Delhi, covering more than 3.8 million households. We have another program that focuses on decentralized solid waste management, specifically for smaller towns. And this is very successfully running in cities like Munger, Saharanpur, and Haridwar. And this is spread across 17 districts covering about 0.7 million households, taking our total coverage of our own initiatives to about 4.5 million households. We have also implemented first of its kind model like the ITC Swachh model in Pune, which is actually collecting and recycling multi-layered plastic packaging films. At the same time, we are also working towards ensuring that 100% of our packaging is recyclable, reusable, or compostable. And the fundamental principle behind our initiative is the focus of segregating waste at source into dry and wet streams, thus ensuring that the value is derived from these resources and in the process support sustainable livelihood for our waste collection and grant pickers. Friends, as we as we are actually initiating this workshop, I would just like to mention that as we aim to realize a circular economy in our country and actually create value out of the waste, we have the opportunity to lead this while also reducing the carbon intensity of our economy. Hence, I'll urge that we actively participate in this program and take help and leverage each other's knowledge. And we would need to work together to create this win-win partnership models and deploy the best available technologies to recycle the plastic waste in a truly circular manner. I'm hopeful that this session today will bring out interesting insights and will create the path forward. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind introductory remarks. मैं अभी हमारे साथ दो बलिष्ठ पब्लिक लीडर हैं, जन नेता हैं, ऑनरेबल मेयर ऑफ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीता साहू मैम बहुत बिजी रहते हैं ऑन ग्राउंड, हमेशा ग्राउंड में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए घूमते रहते हैं. मैं देखता हूँ स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ या इस तरह से कोई भी कार्यक्रम जब होता है ग्राउंड में तो मैम हमेशा पब्लिक के बीच बिजी रहते हैं. तो हम सुनेंगे मैम से. अब मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, इतने आपके मैम बिजी रहते हैं आप, लेकिन हमें वक्त दिया, टाइम दिया मैम, थोड़ा सा पटना, क्योंकि पटना हमारे और बिहार हमारे ईस्टर्न इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वेस्ट बंगाल पटना जो मॉडल सेट करते हैं वो उस रीजन और पूरे देश के लिए एक उदाहरण माना जाता है. तो मैम, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से काम कर रही है और पब्लिक के बीच आप किस तरह से ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, अब सिंगल यूज प्लास्टिक का जो रूल आया है, ये किस तरह से आप वहाँ अवेयरनेस कर रहे हैं मैम और इम्प्लीमेंट करेंगे? अतिथि माननीय डॉक्टर रत्ना जी नाग, माननीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी और जैविक राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, श्री संजीव विजय वर्गीय उप महापौर रांची नगर निगम, माननीय अतिथि और वक्ता डॉक्टर अशोक कुमार घोष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, डॉक्टर अरूप कुमार मिश्रा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम के अध्यक्ष, डॉक्टर विशु कर्माकर, त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, डॉक्टर गोपाल प्रधान, सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, श्री एम पटेल, अधीक्षक अभियंता मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, मोहम्मद सादाब भाया, उपनगर आयुक्त गया नगर निगम बिहार, सुश्री नेहा जैन, संस्थापक और सीओई,
आज के वर्तमान परिवेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग चिंता का विषय है। आज देश में चारों ओर प्लास्टिक का प्रतिबंधन को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इस चिंता को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 1921 को सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है। हालांकि बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र भूमि तल से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ काफी मात्रा में प्लास्टिक कचरा नदियों को प्रदूषित करता है। जैसे कि मुख्य रूप से गंगा नदी जल प्रदूषण के अलावा कूड़ा जलाने पर जहरीले धुएं का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। सिंगल यूज प्लास्टिक वर्तमान परिवेश में ठोस अवशिष्ट एक महत्वपूर्ण कारण है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के उपरांत हम लोग इसे घरेलू कचरे के साथ डाल देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सड़क पर इधर उधर फैल जाता है, सीवरेज एवं ड्रेनेज में जाकर जाम कर देता है। इससे आए दिन जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही एक अध्ययन से यह भी पाया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जल स्रोतों के प्रदूषित होने का एक प्रमुख कारण है। इसका सीधा प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ रहा है। आज प्राय यह देखा जा रहा है कि लोग घर के बचे हुए खाने को प्लास्टिक में डालकर सड़कों किनारे फेंक देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पशु को इसे खाकर रोगग्रस्त हो जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों को गिनाना शुरू करें तो समय काफी लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को शहरी क्षेत्रों में पूर्णतः प्रतिबंध करने की दिशा के कई कदम पटना नगर निगम द्वारा उठाए गए हैं। पटना नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। UNDP के माध्यम से नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ थैला लाओ पाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों की समस्या माध्यम से थैला उत्पादन केंद्र प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से नगर वासियों को सस्ते दर पर थैला उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। प्लास्टिक को दे दिया नया रूप, जो बदले प्रकृति को का स्वरूप। प्लास्टिक से धरती को पॉल्यूशन फ्री बनाए, आने वाले जनरेशन को नई रोशनी और की ओर ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैम। आपने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे और हमने नोट किया। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से कुछ काम कर रही है, इसमें वो आपने मेंशन किए। बहुत बहुत हम आभारी हैं मैम, आपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला और हमें दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ऑनरेबल डिप्टी मेयर हैं संजीव विजय वर्गीय सर फ्रॉम रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर भी बहुत ग्राउंड में जमीन में लोगों के बीच काम करते हैं और काफी ट्रैवल करते हैं, भी व्यस्त रहते हैं। सर आपसे गुजारिश करेंगे, सुनेंगे कि किस तरह से रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैंपेन आया है इसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, हम सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आज WeCare एंड द पॉलिसी के द्वारा आयोजित इस नेक कार्य के लिए, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी समस्या अगर पूरे देश में है तो सिंगल यूजेस प्लास्टिक जो उपयोग में आ रहे हैं उसके चलते पूरे देश की स्थिति पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत बुरा हो गया और आपने उस नोबल कॉज को उठाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अकरम भाई जो इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, अभी हमारी महापौर पटना सीता साहू जी
भी बोल रही थी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज के इस स्वागत भाषण जो पुणे की मैम ने दिया, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जितने स्पीकर्स आज के दिन यहाँ मौजूद हैं, जो कि अलग अलग समय लोगों को अपनी बातों को भी बताएंगे, अपने रिस्पॉन्स को भी बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे, और आगे क्या होना चाहिए वो भी बताएंगे। वैसे सभी स्पीकर्स को मेरी ओर से नमस्कार, और वासिम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, अकरम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में उपस्थित होके इस विषय पर अपना कुछ बात रख सकूं। बंधुओं, एक बड़ी विकट समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, और ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण को तो दूषित कर रही है, साथ ही साथ हमारे रोजमर्रे के जीवन को भी बहुत प्रभावित करती है। अभी जैसा मेयर ने बताया, बिल्कुल सही बात बताया कि सबसे इनिशियल तो ये है कि अगर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से होता है, तो सबसे बड़ी समस्या अगर नगर निगम को आती है वो है नालियों की समस्या। सभी ड्रेन चौक अगर हो रहे हैं तो उसमें सबसे प्रमुख योगदान अगर किसी चीज का है तो वो प्लास्टिक का है। रांची नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार भी इस ओर अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमारे यहाँ 40 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिकों के उपयोग पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। साथ ही साथ हम प्रयास करें, आपको बताऊं मैं, हमारे नगर निगम में लगभग 53 इन्फोर्समेंट टीम का हम लोगों ने गठन किया है। उनका काम ही यही है कि वो दिन भर शहर को व्यवस्थित करने का काम करें। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा प्लास्टिक भी है। हमारे यहाँ रोज जो ठेले हैं, दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, वहां जाके और इन्फोर्समेंट टीम प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध करने का काम करती है, उसे रोकने का काम करती है, फाइन इम्पोज करती है, जिससे कि इस चीज से हम मुक्त हो सके। तो ये काम लगातार चल रहा है। हमारे पॉन्ड्स है, तालाब है, सब कुछ प्रभावित इससे हो रहा है, और इसको कैसे रोक पाएंगे इस पर गहन चिंता लगातार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिलके अनेकानेक कार्यक्रम करने का आयोजन करने का भी काम किया है। अभी आपने देखा होगा, अगर एक साल की पूर्व की हिस्ट्री आप देखेंगे तो जिला प्रशासन के सहयोग से हम सभी स्कूलों में, बाजारों में यूथ को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके एक कैंपेन चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जागरूकता बढ़े। क्योंकि जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक हम इन चीजों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई चीज की है तो वो है जागरूकता की, और जागरूकता लाना, जनता जिस चीज की आदत लग गई है जनता को, पिछले वर्षों वर्षों से वो इस चीज से वाकिफ हो गए और वही चीज का उपयोग करते हैं जो उन्हें सरलता पूर्वक सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाए। तो अब उससे उसको चेंज कराना, तो मैं समझता हूँ कि एक रिवॉल्यूशन है जिसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन जो प्रयास चल रही है, आज अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पहले सफाई, अब बाद में अब प्लास्टिक फ्री देश, इस तरह का जो कैंपेन चलाया, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे युग बदलेगा, और युग बदलेगा तो कहीं ना कहीं हम इस परिवर्तन से फायदा पर्यावरण को भी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि विश्व में आज भारतवर्ष अपने आप में एक श्रेष्ठतम देश के रूप में उभरा है। अपने सभी कामों को, पिछले अगर 5-7 साल की आप कार्यों को देखेंगे तो भारत ने अपनी पहचान पूरे विश्व में अलग अलग रिवॉल्यूशन लाने की है। हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पॉल्यूशन सेक्टर हो, चाहे सफाई का सेक्टर हो, चाहे उत्पादन का सेक्टर हो, सभी जगह हम अपने आप को एक लीडर बनाने का काम कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जरूरत भी है आज के दिन की पूरे विश्व में हम अपने आप को दर्शा, चूंकि इतना बड़ा देश हमारा और इतनी प्रतिभाएं हमारे देश में, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे बाकी जितने कंपोनेंट, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो विदेशों में जाके सेवा दे रहे हैं, विदेशों के चीजों को लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष भी इन सब चीजों को अगर अपने आप में समाता है तो पूरे विश्व में राज करने की योग्य स्थिति में आता है। तो मैं समझता हूं कि अपना देश इस स्थिति में चल रहा है। आज के दिन जिस तरह से प्लास्टिक के उपयोग से हम पशुओं को का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल अभी महापौर महोदया ने कहा कि कैसे हमारी गाय
भैंस, बाकी लोग जो प्लास्टिक के टुकड़े खा के और मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में कहलाता है। तो उसका उपयोग हम कैसे बंद करें, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। आज के दिन मैं आपको और एक बताऊं कि रांची नगर निगम ने किया है। हम लोगों ने सीसीएल के साथ सीसीएल के सीएसआर फंड से 1 लाख थैला बनाने का काम किया, और वो 1 लाख थैला हम लोग प्रत्येक सब्जी मंडियों में जाके, हमारे जितने वार्ड पार्षद है, हमारी महापौर हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे सिटी मैनेजर्स हैं, वो अलग अलग मार्केट एरिया में जाके उन थैलों का वितरण इसलिए किए कि एक बार फ्री में अगर थैला देंगे तो उसका उपयोग से लोग इस जागरूकता में आए कि वो प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें। मुझे लगता है कि आपके इस पूरे जो चर्चा है उसमें एक चीज जरूर सामने आनी चाहिए। सरकार को सब्सिडी जो अन्य उपाय हैं, जैसे कागज के ठोंगे, कपड़े के थैले, इसमें सब्सिडी देने का काम करना होगा तभी, क्योंकि जनता क्या है, जनता जो सस्ता चीज मिलता है उसी का उपयोग करती है। जनता को सस्ता कोई भी चीज मिलेगी तो उसका उपयोग करेगी। अब उसके उपयोग को अगर हम बंद करना चाहेंगे तो हमें उस कैटेगरी, उस रेट में उन चीजों, अल्टरनेट चीजों को भी लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इस तरह का मार्केट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम कॉम्पिटिटिव रेट में उपलब्ध करा सके ऐसे चीज जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से सरकार के पास इन सब चीजों को इंगित करना चाहिए। और बाकी मैं समझता हूं कि आपका ये जो चर्चा है आज का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे इन चर्चाओं में जो चीजें आएंगी उसको आप उचित प्लेटफॉर्म में रखेंगे। ईस्टर्न जोन का ये मुझे लगता है कि फर्स्ट चर्चा का आप लोगों का सेमिनार है। बाकी पूरे देश में इस तरह के विषयों पर चर्चा होने के बाद हम सरकार के पास क्या ले जा सकते हैं और सरकार उस पर क्या इम्प्लीमेंट करती है, उसका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आने वाला दिन प्लास्टिक मुक्त हो, आने वाला दिन पर्यावरण सहित हो, और आने वाला दिन हम सब सुख चैन से जिए, ऑक्सीजन फुल मात्रा में प्राप्त हो और कोरोना से मुक्त हो, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सजेशन है आप लोग। Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Sita ma'am, for all your guidance, support, and it was really good to hear out such great ideas. I mean, Sanjeev ji mentioned that ultimately economics would work. People who are as far as the psyche of a common man is there, we have to make the alternates available to them and then expect a switch over. So that is a very good point, sir. We would be taking all these points, as you rightly said. We would be collating all our suggestions coming out from these regional dialogues, and we would be taking to the government. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. So, Honorable Mayor Ma'am, Sanjeev sir, wonderful to have you. आप लोगों को आपने जो सुझाव दिए, हम इस सुझाव को एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे। जो आपने ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग फ्री होनी चाहिए। क्या होता है, आज जब हम मॉल में जाते हैं तो 10 रुपए से खरीदना पड़ता है प्लास्टिक कागज वाला पैकेज। अगर वो फ्री कर दिया जाए तो बहुत बदलाव आ जाएगा और आम आदमी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई थिंक विद दिस वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ बहुत कुछ इम्पोर्टेंट स्पीकर जुड़े हैं और बिल्कुल ग्राउंड से स्पीकर हैं जो जमीन पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एडवोकेसी करते हैं और काम करते हैं। ये हमारा अभी नेक्स्ट सेशन है, प्लेनरी सेशन 1, रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे साथ हैं ऑलरेडी डॉक्टर अरूप कुमार मिश्रा जी जो चेयरमैन हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम। साथ में डॉक्टर विशु कर्मकार जी हैं जो मेंबर सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहाद याहिया साहब जो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं गया नगर निगम बिहार के। अभी डॉक्टर अशोक कुमार घोष जी थे हमारे साथ, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, चेयरमैन बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और 3 हमारे जो पॉपुलर और बहुत बड़े स्केल के रिसाइकलर्स हैं और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं
उनमें से मिस्टर अमरेंद्र कुमार जी होंगे, होल टाइम डायरेक्टर रैम KRM। पारस गुप्ता जी ऑलरेडी जुड़े हैं हमारे साथ, डायरेक्टर EPR सस्टेनेबिलिटी जेम इन्वायरो, नॉर्थ इंडिया का एक बड़े WMA और रिसाइकल में से एक हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर राकेश मिश्रा जी, जो मिश्रा ट्रेडर्स मध्य प्रदेश द्वारा एक बहुत अच्छे बड़े WMA और रिसाइकलर हैं। तो हमारे इस सेशन को मॉडरेट करेंगे मिस्टर कमल शर्मा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है WeCare के। तो मैं कमल जी को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पीकर को इनवाइट करने के लिए, Thank you. सेशन को मॉडरेट करने के लिए। Thank you, Akram. I would like to welcome Dr. Arup Kumar Mishra. Sir, you can switch on your camera. Akram, if you can just allow them to. He is joining back, I think some network issue. So Vishu sir is here. Okay. Dr. Bishu Karmakar, sir, you can switch on your camera and mic now. Yeah. Welcome. Mohammed Shahab Yaya, you can, Deputy Municipal Commissioner, Gaya Nagar Nigam, Bihar. Yeah, welcome, sir. We would also have Mr. Vishnu Prabhakar, City Manager, Gaya, joining him. Akram, just let me know when Dr. Ghosh joins back so that we can invite him. Right. Okay. We can start the session with Vishnu, Okay. sir, and then we'll have. Okay. Yeah. So, a warm welcome to all the key stakeholders, specifically from the pollution control boards and municipal corporations. So over the years, we have been looking a lot of actions on ground. You guys are the people who actually take it from the front and get the things. You implement the regulation and also help the stakeholders to comply in a right manner. So I would like to invite Dr. Bishu Karmakar, Member Secretary, Tripura State Pollution Control Board. Dr. Karmakar, we would like to hear from you in terms of what all have been the initiatives by your state in this overall mechanics of plastic waste management. We also have, upcoming ban on some of the single-use plastic items, and your state is having industries as well as MSMEs, if I may say. So how you are going to have a balance that environment is saved and then the kind of impact on economy is minimized, if I may say. Over to you, Dr. Karmakar. Dr. Karmakar, we are not able to hear you. Yeah. ईस्टर्न इंडिया का ये थोड़ा इंटरनेट वाला इशू है। AK मिश्रा सर ज्वाइन कर रहे हैं, अरुप मिश्रा जी, तो उनका इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम है ईस्टर्न इंडिया का। So AK Mishra sir, we can have. AK Mishra sir is there. Sir, if you can switch on your camera. Arup sir, if you can switch on your camera and mic, please. Vishu sir is also back. Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah. Am I audible? Yes, very well. Over to you. Can you hear me? Yeah. Okay. Yes. So I think I am audible, na? Yes, sir. Yes. Okay. So good morning to all the dignitaries, speakers, and of course the organizers, WeCare, and the Policy Times, and all the industry leaders who have joined this morning in the regional conference on plastic waste management and single-use plastic scenario in India 2022. So first of all, I must convey my greetings to all from Tripura State Pollution Control Board, and obviously thanks to organizers for inviting me to join this platform today. So the
topics for hello. Yeah. So, Vishu sir, if you can give me 2 minutes. Actually, Okay. Arup Kumar Mishra sir is here. Mishra Okay. sir is a very important meeting. Okay, Arup sir, sir. can you hear us? If you can just quickly speak. And Okay. yeah. So we will hear Arup sir, and then we will come back to Vishu sir. Yes, I can hear you. Audible. Akram, am I audible? Yeah, sir. Please go on. So shall I start just few minutes? Please, sir. Yes, please. We Yes, have some please. very important selection committee meeting. Yeah. So anyway, thank you. The Policy Times, this is the second time I am participating here. A few months back, we had the opportunity of another There'll be a small glitch actually in between. Just tell you, it is about more than 6 months now that we have. I have taken charge as Chairman Pollution Control Board of Assam, and we took it in right earnest immediately as the whole country was gearing up for elimination of single-use plastic by 30th June, and from 1st of July this year, 2022, we have. Yeah. So, sir has taken charge for since last 6 months. Yeah. Districts, So all districts, all state departments who are involved with this, like urban local bodies, other things like forest, environment, forest department, etc., all are being geared up for this. So single-use plastic has been now very much in the agenda for Assam. And in case of our pollution control board, we have already yeah. So some glitch will be there. Demolition waste and so on and so forth. So that we have been doing a lot of work in Assam. Assam, the biggest problem is that whatever we use, single-use plastic inside the state, the manufacturers and the market survey people, including the Indian Chamber of Commerce, etc., they say only 10% is produced in Assam. 90% comes from outside. Single-use plastic in Assam. Even then, 19%, if it is by some means produced in the neighboring states, will be coming to Assam. This is a big challenge. Our local, number one. Number two, recyclers, they came to meet me and said that we are told to recycle the plastic. Sir, our plant is of some capacity where minimum this much of plastic is required, which you don't get. Because of a very, very poor system of collection and lot of segregated places where plastics are being collected, there is no single point of collection or a few points of collection. Therefore, economically, these recyclers are facing problems. Therefore, to run their plant in Guwahati or neighboring Guwahati, they're bringing again plastic waste outside from the state. Say from West Bengal, say from Bihar, Jharkhand, plastic waste is coming for the local recyclers to run their plants. So we have a twin process, like two-way process. One way, we don't produce all the SUPs used in Assam, it comes from outside. And number two, we don't have also mechanism for collection, which is a big challenge for Pollution Control Board. Now, only one positive thing is that Dalmia Cement in Umrangshud Hill district of Assam, they're having a co-incineration unit where this plastic waste legacy mining has been done in Guwahati Municipal Corporation, and the plastic waste every day 5 to 6 trucks, which means about 10 to 12 ton of plastic waste is going from Guwahati
to the Dalmia Cement co-incineration plant, where they are going for incineration. But this is only one point now, and this particular place is not approachable from the entire state. Therefore, we in the Pollution Control Board, we are thinking of like increasing the number of points where this type of units can come up. This is a very expensive process actually. Dalmia Cement has done it, but any XYZ or even our civil authorities bodies cannot do it. Very difficult for them. Also, PCBA has submitted. I was there last week, only 1 week back. I was there in CPCB for a meeting launching of some Prakriti and other programs in the CPCB, where both the ministers of India, MOEFCC ministers, cabinet minister, and Minister of State, both were present. I met personally the member secretary and chairman of Pollution Control Board, and we have submitted a proposal for project under like assistant for abatement of pollution. Now we know the state pollution control boards no longer get any cess. Water cess is over. That generation is over. There is no water cess. Therefore, in lieu of water cess, assistance for abatement of pollution under that heading, they give us some money. So we have asked for money to facilitate all the producers to implement EPR in a very modern digital platform. So I'm told that this proposal almost is passed. So if we get that money for all producer, recycler, consumer, waste picker, even the waste picker, the rag pickers, which we call kabariwala, and all these people working there, everybody will be coming under one digital platform where we can keep the data. We know the quantum of generated, how it is coming, where it is, and so on and so forth. So, for the people who are now who are participating, all my fellow participants, I think no problem. But the problem in India is that these wastes are being generated. We have very done by all the municipal corporations and local protest corner, whereby all the 5 particular points I would emphasize. 1st of July this year, single-use plastic, all this plate, cup, spoon, barati, or some shadi biyah, or some social function. They say how easily we are using this now. You are going to replace it. कहाँ से मिलेगा? आजकल तो इतना केला का पैर भी नहीं है जो पहले हम लोग बचपन में पत्ता यूज करते थे. केला गज का बनाना लीफ, अभी वो भी नहीं रहा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? और बाकी जो है आपका alternative material made of some, I know, plant-based material, it is very expensive. So besides forcing something on the people, हमको ये भी देखना है कि ये कितना हद तक ये economically viable है, how much people can afford. So lots of research and development has to go into finding out the single-use plastic alternative. This is one point which we have flagged. And we are working with Guwahati IIT और बाकी सारा जितना भी यूनिवर्सिटी है असम में, सबके साथ हमने इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया. मेरी दूसरी जो है वो है very huge amount of innovation. प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव ढूंढे और कैसे हम लोग अपने सामान को हम काम पे लाए. Then we no government rules and regulations. कोई भी, you talk about any rules and regulations in the country, NGT is there, Supreme Court is there, state boards are there. आज तक हमने क्यों इतना जितना होना चाहिए था इतना हमको सक्सेस नहीं मिला? उसका मूल कारण यही है कि हम लोगों तक जा नहीं पाए हैं. We have not been able to reach people. People even now do not know about certain rules and regulations. आज भी some people in the city like Guwahati, very literate people, very very highly placed people, they tell me when they meet me, they tell me कि हमने जितना हमारा घर में था पूरा कचरा सबको पीछे जला दिया है. प्लास्टिक का थैला, मैंने बोला प्लास्टिक का पन्नी क्या हुआ? बोले वो भी हमने जला दिया है सर. We have disposed it very nicely. वो कहीं हमने कहीं वेटलैंड में नहीं फेंका है. तो मैंने बोला आपने ठीक है, आपने सॉइल और वाटर पोल्यूशन को रोध किया, लेकिन आपने एयर पोल्यूशन क्रिएट किया है.
तो ये एक मतलब एक देखने वाला चीज है। हमने एक पर्टिकुलर और सर लास्ट पॉइंट जो है अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ शर्मा जी है, गुप्ता जी है, गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साहब भी बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक मतलब वी हैव टू come together all of us and we share our experiences. Lots of good governance and coordination is required. तो हमारे जो यहाँ है अभी लघु उद्योग भारती का लोग आए थे, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया, फिकी, जितना भी हमारे सब ट्रेड बॉडीज है, इंडस्ट्रियल बॉडीज है, वी हैव टू वर्क विद एवरीबॉडी। ये मुद्दा केवल अर्बन लोकल बॉडी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक इरेडिकेशन अभी 10 आइटम है इस बार। फॉर दिस ईयर 2022 में जो है वहां 10 आइटम उन्होंने आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी ये 10 आइटम को निकाल के मैं आज भी मतलब आई एम माई सेल्फ वेरी मच स्केयर्ड कि 1 जुलाई से हमारे सामने क्या होगा, हाउ पीपल विल ऑर्गेनाइज देयर social functions and how they will run, and people who are working, millions and millions of people who are working with these type of industries, either labor or seller or retailer, उनका क्या होगा alternative livelihood? Because देखिए pollution control के नाम पे हमने ऐसा कुछ, हमको ऐसा नहीं कुछ करना है जिससे livelihood पे असर पड़े। तो ये भी एक मुद्दा जो है, two parallel lines, they will never meet each other but they have to be maintained together. तो अकरम भाई आपने जो एक हमको भेजा था, he had sent me one mail WhatsApp yesterday where some state government initiatives have been given. तो आपको बता दूं मैं, जो आप फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था, गुवाहाटी डील्स विद प्लास्टिक वेस्ट बाय बिल्डिंग रोड, ये बड़ौदा से लाया था। ये आसाम में बना हुआ प्लास्टिक नहीं था, जो प्लास्टिक ग्रेन्यूल था रोड बनाने के लिए, इट वाज ब्रॉट फ्रॉम बड़ौदा। मैंने रात को ये इसको खबर किया तो खबर मिला फ्रॉम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कि यस वी हैड गॉन फॉर सम पायलट प्रोजेक्ट। तो आसाम में ये ग्रेन्यूल अभी तक नहीं बनता है, जो ग्रेन्यूल चाहिए फॉर मेकिंग द रूरल रोड्स और थोड़ा सा लेस क्राउडेड रोड्स। तो उसके लिए हमने बड़ौदा से लाया था। और सिंगल यूज प्लास्टिक का आपने जो लिखा है लेस देन 60 mm एंड लेस देन 50 माइक्रोन थिकनेस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अभी 75 माइक्रोन से लेस है, आप जानते हैं। 1 जनवरी 22 इस साल से इट शुड नॉट बी लेस देन 75 माइक्रोन, इससे ऊपर ही होना चाहिए। जितना कम पर केजी में जितना कम पन्नी आए उतना अच्छा है फॉर रिसाइकलिंग पर्पस। ठीक है, नोटेड सर। बाकी सेफ आपने लिखा है सेफ एनवायरनमेंट इन आसाम। हाँ, आपने बोला है कि यू डोंट राइट, वो आसाम से गुवाहाटी से इंटरनेट इज अ बिग प्रॉब्लम। वी कैन विशु सर इफ यू आर देयर, अगर कैमरा से आइए। विशु सर आपका भी, हाँ, सो कैन यू हियर अस? कमल, we can then yeah, because सर का ना वो इशू चलता रहेगा, रूप सर का। I understand. Thank you, Mr. Mishra, for highlighting very fundamental issues. Yes. तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ये करना पड़ेगा। We have to keep that, and how to minimize the waste, maximize recycling and reuse, वो होना चाहिए हमारा। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या करोगे? पेपर, कॉयर, going to
What is the alternative? So we are facing a lot of challenge in the network, I guess, and uh, your points are not able to be, communicated to us. I think there is some technical glitch happening at your end. So, I mean, but we got a very clear picture of what you wanted to say around the when we are basically looking forward to move to a circular economy. We say circular economy. We don't say circular environment. And when we say economy, then definitely there are jobs involved. There are economics involved, and that's where I think you have very valid point that we need to have uh, outcome of these kind of bans to be seen in the context of the jobs that are going to be lost, and also is there any alternates which is being available, alternates both in terms of the product, the alternate product who would replace sup, and also alternate economic model for where the current jobs can be switched to circular economy. So thank you, sir. Thank you for highlighting all these very fundamental issues. And we would now move to Dr. Bishu Karmakar. Dr. Karmakar, you have been kind enough to give space to Dr. Mishra as he had some meetings. So we request your views that how Tripura as a state is has planned out its initiative, and how you see upcoming ban on single-use plastics is going to be implemented, or do you see the opportunities there, or do you see some challenges there? So over to you. Okay. Am I audible? Yes, you are on. Okay. So, so actually in our states, actually in our state, since 2015, the total plastic carry bags, irrespective of the thickness, are banned whole state of Tripura. So not only that, for its effective implementation of the ban order of plastic carry bags as a single-use plastic, monetary penalty with minimum of rupees 100 to rupees 5,000 have been imposed by the government of Tripura as a penalty and pollution cost. So as on date, rupees approximately 6.5 lakhs have been collected as the pollution cost as a penalty from the all the violators. So last 2-3 years ago, in our states, there was no such recycler of plastics in the state of Tripura. But now in our states, 12 numbers of registered recyclers have established their units, and they are also collecting the plastic wastes through their channelization of involving rack pickers. Am I audible? Hello? Yeah. Yes. Okay. Okay. So one thing is our good thing is that in our state, no single-use plastic items manufacturing units are in the all the single-use plastics which are being used by everyone are coming from other states, like car plates, etc. And there is no manufacturing units of plastic carry bags in our state also. So all the items are being imported from or coming from other states.
So in our small states, only 61.5 tons per annum plastic waste generated during the last year. So these plastic wastes are being collected with the municipal waste with source segregation from individual house. So in our states, door-to-door waste collection with source segregation practice are being adopted by the urban local bodies, and there are one material recovery center of plastic waste is working, and these material recovery centers is collecting plastic waste from all the urban local bodies in the state. So total quantity of plastic waste collected from September 2021 to March 2022 is 124 tons, and the total amount of plastic waste sold, the quantity is 86 tons, and the revenue collected by selling the plastic waste in that period is rupees 6.3 lakhs. So in our state, the government is very serious regarding the plastic waste management, and the state level advisory committee has also been constituted under the chairmanship of the principal secretary urban development department, and frequently they are review the what is the plastic waste management in urban local bodies, and these producers, importers, brand owners, regulations, whatever the issues. So and there is a state level committee also under the chairmanship of the chief secretary. So regularly these are reviewing very for the effective implementation of the plastic waste management rules. So as a pilot basis, 0.68 kilometer road was carpeted with mixtures of bitumen and plastic waste under Agartala Smart City project, and that road is I think the condition is good because it was carpeted last 1 year ago. 1 year ago. So and the government of Tripura has also instructed the PWD Roads and Construction Department to frame a policy for using plastic waste in road construction. So apart from that, the CPET Agartala, there is a CPET Institute, Central Institute of Plastic, and Institute is in Agartala. So CPET is also working to make the tools for making paper blocks using plastic waste in collaboration with the Tripura State Pollution Control Board. So this type of public oil blocks will be used in lawns and parks in Agartala. And self-help groups are also working to make alternatives of single-use plastic like paper bags, tongas, and the bags of the jutes and other products using bamboos. So there is a Bamboo and Research Institute in Agartala, BCDI. So BCDI has also been interested to explore the making alternatives of single-use plastic using bamboos and other leaf products, banana leaves or whatever the natural resource are in our states. So basically, and the main issue is that from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India amended the existing plastic waste management rules 2016 on 12th August last year, and ban on import, sale, and handling of single-use plastic from 1st July this year. So mainly 10 items are there in this list. So from Pollution Control Board, we already issued public notice highlighting the banning items of the single-use plastic items, so that the people may aware regarding the single-use plastic items which will be banned from 1st July 2022. So I think that only the regulatory framework alone cannot be a sustainable solution of plastic waste management. So I think the chairman Assam Pollution Control Board, he also highlighted these points. Actually, in our state also the available single-use alternative of single-use plastic items
whatever the alternative may be, these are very less in quantity, and it is not available in the market. So I think uh, apart from the regulatory framework, there must be workout government and regulatory authority, and also the producers must work on the infrastructure development for collection of plastic waste and the development of plastic recycling infrastructures. If the recycling capacity of the plastic waste will be more, then the menace of the plastic waste will be minimized. So, and the promotion of alternative of single-use plastics. So, mainly more research and development activities must be required to make available alternatives in the market, so that the people, actually in our states, whenever we are organizing the awareness campaign in our eco club schools in our states, there are 750 eco club schools. So whenever we are organizing the awareness program on ill effects of single-use plastics, so everyone asks that what type of alternative we are using. That means that is easily understandable that people are very much aware about the ill effects of single-use plastic, but they are willing to reject that single-use plastic. But one issue is that what will be the alternatives? Previously, some paper tungas, that means made of paper, that are being used, that were used in the earlier times, and banana leaves were used instead of thermocol plates and plastic plates. But so that the alternatives must be available in the market. So in this regard, more research and development works involving the NIT, IIT, and CSIR institute. So, so many alternatives have come with their own advantages and disadvantages, but the actual their strengths and the cost-effective issues are also important. Some alternatives are available in the market, but they are not compatible with the single-use plastic items. So that must be also considered. So, in apart from that, in our states, special task force under the chairmanship of the chief secretary are in action for formulation of action plan for phasing out of single-use plastic in the state of Tripura. Tripura State Pollution Control Board are also actively involved in this comprehensive action plan formulation. So, in the last, what are the main issues we'll be highlighting in that action plan is making alternative items of the single-use plastic. It is the main issue. If the alternatives of single-use plastic is available in the market, so everyone may reject the single-use plastic without any very legal framework, without any issues, whatever I think. So apart from that, more involvement of more SHGs, self-help groups under the Tripura Rural Livelihood Mission. So using the utensils made of bamboo, erica nut, banana leaves. So with the help of that natural resource, if self-help groups will will manufacture the alternative of single-use plastic. So and apart from that, capacity building of entrepreneurs. So those who are willing to make alternatives of single-use plastics, if the MSME or government of industries and commerce departments provide the capacity building program involving the entrepreneurs development shape to make alternatives of SUP, then I think the single-use plastics banning order will be effective. And so that's all from our state's initiatives. And so I hope that today's webinar will be very useful to show the pathways by which the sustainable plastic waste management will be achieved in the every stage and in the nation. Thank you very much. Thank you,
Thank you, Dr. Karmakar. I think you very well resonated with the idea of what Dr. Mishra was saying earlier in the session, is that uh, when it comes to making the alternates available to the people, we need to ensure that they are basically techno-commercially viable products, because anything which is coming out at a very higher cost, or maybe, there might be supply side constraint if we want to switch over completely on biodegradable side. I mean, we don't have so much of banana leaves, we don't have so much of other kind of Exactly. bio-based material available to make so much of single-use plastic. But yes, to save the environment, we have to look at ways and means. And you have very well pointed out the one important opportunity is that involvement of self-help groups, and that's where I think we would bring in, not only bring in uh, people's participation in bringing alternatives to plastics, but also we would generate jobs when we are switching over to a newer alternative. Thank you for your thought leadership, and thank you for sharing all these very thoughtful suggestions from your side. I would now request Thank you. Mohammed Shahab Yahya, Deputy Municipal Commissioner, Gaya. Uh, 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 Mohammed Yahya, you are basically handling these issues day in, day out. And Gaya being a very important city of our country, both in terms of its economic and religious value. You have a lot of tourists also coming to Gaya. And many a times there are discussions around how we can go for sustainable tourism. And one important aspect is how we can manage our sustainable, how we can manage the solid waste in a very sustainable way. So we would like to listen from you that what have been your experience in terms of over the last 5 years, if I may say, since Swachh Bharat came, since EPR of industry has come. What are the things that you have seen structurally changing on ground, and where do you find opportunities for all stakeholders to join hands and make a change on ground? Over to you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञाननगर निगम से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद शाहविया बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ ज्ञाननगर निगम में 53 वार्ड्स हैं, जिसमें पर डे 300 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट का उत्पादन हो जाता है, और जिसका सेग्रीगेशन और निष्पादन हम लोग अपने स्तर से करते हैं। इस 300 मेट्रिक टन में 5.8% यानी 18 टन पर डे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है पर डे के हिसाब से, और इसका हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं। और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हम लोगों ने अपने यहाँ जो डंपिंग यार्ड है वो मेरा बहुत बड़ा है नैली में, जिसमें जो 23 एकड़ का है उसमें हमने स्थापित किया है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का, वो जिसका कैपेसिटी जिसमें मटेरियल रिकवरी जो MRF है वो उसमें हम लोग जब सेग्रीगेशन करते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ 17 और तरह के वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं, जिसमें शीशा है, पेपर है, कपड़ा है। इन सबों का फिर रिसाइकलर को उसको देते हैं। हमारे यहाँ 4 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा ये लिगेसी वेस्ट था जमा, जिसमें 50% को हम लोगों ने निष्पादन कर दिया है। और इसमें से जो भी RDF जो निकलता है उसको सीमेंट प्लांट में भेजते हैं हम लोग, फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे डालमिया सीमेंट है, श्री सीमेंट है औरंगाबाद में, और उड़ीसा जाता है, यहाँ से गया से ही जाता है। और जहां तक प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है तो प्लास्टिक तो बैन है ही। हम लोग टाइम टू टाइम जो है टीम बनी हुई है जो छापामारी करती है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से भी हम लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई यूज नहीं करना है। पहले से तो बहुत ज्यादा चेंज आया है, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। एक बार तो हम लोगों ने 24 टन प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया था और फाइन इम्पोज किया था। फाइन का भी प्रोविजन है, लेकिन थोड़ा सा
अब लोगों को अवेयर करने में ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि लोग उसका नुकसान समझकर उसका इस्तेमाल ना करें। पहले से चेंज आया है लेकिन अभी भी है। हमारे यहाँ गया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। लीगेसी वेस्ट मेरे यहाँ लगभग खत्म पर अब आ गया है। 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा था मेरे यहाँ, अब हमारे यहाँ 25-30% मुश्किल से बचा होगा और वो हमारा देखने लायक है। बिहार में हम समझते हैं कि उतना अच्छा, अब पता नहीं कहीं और है कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर लोग भी आए थे और उन लोगों को भी विजिट कराया गया है और काफी इस पर काम किया है हम लोगों ने। थैंक यू। Thank you, sir. I think it's really nice to know that you are not only handling the waste that is being generated day by day, but you have also addressed the legacy waste. And 2 lakh metric tons of waste has already been disposed of. I mean, Yes. it's not a small feat. And you have been, I think, taking initiative, whether you want to create awareness, whether you want to have your regulatory team on ground. I think kudos to all the officers which are working with you on this nice. Just I would like to extend my question to that. Now we are moving into, our country is moving into an era where 1st of July, there are a lot of news that 1st of July the single-use plastics is going to go. What is your feeling or your way of looking at this issue, that how it's going to be implemented? Because if we are hearing various voices. Some people are saying it would not be implementable, some saying it would be partly implementable, and some of them are saying that there are no alternatives. We have heard that there are no kind of an alternative. So what is your view when it comes to phase out of single-use plastic? इम्पोज करने में तो इशू आएगा ही, 1 जुलाई से पूरा जो किया गया है, लेकिन क्योंकि मार्केट में उतना ज्यादा अल्टरनेटिव है नहीं, उस पर भी काम करना पड़ेगा। और अल्टरनेटिव जो भी है वो उतना इकोनॉमिकल नहीं है। और जैसे प्लास्टिक के जिस रेट में मिलता है उस रेट में तो उसका अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो हम लोग करें, पब्लिक करे और जो है गवर्नमेंट करे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि उसमें we all have to do our role. We all have to do our role. That is what I think. Yes. Thank you. Thank you. And I think you also have Mr. Vishnu Prabhakar, City Manager Gaya, with you, or he is joining separately. Okay. Hello. Hello, Mr. Prabhakar. Good morning. Warm welcome to the session. I think we have heard very clearly from Mohammed Yahya and around all the initiatives that is being done. I mean, you are a city manager of Gaya, so how you see people's behavior? Do you find any change in people's behavior when it comes to segregation of waste at source? We have heard Ranchi earlier. We have heard Assam. Even Tripura said that they are going to have segregation of waste at source. So I would like to ask this very pertinent question, or seek your thoughts on it, that how do you think that segregation of waste at source, which is key for plastic waste management, can be ensured? What are the things that you think would work? Basis your experience. Over to you, sir. जहाँ तक गया नगर निगम की बात है, हम लोग ने लगभग 3 से 4 साल पहले सेग्रीगेशन पे काम किया था, सेग्रीगेशन एट सोर्स पे ही काम किया था। लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। घर में हम लोगों ने अलग अलग डस्टबिन दिए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन हाउस होल्ड्स में उपलब्ध करवाया है। चेंजेस तो आ रहे हैं, केवल मॉनिटरिंग की थोड़ी ज़रूरत है। हम लोगों ने मॉनिटरिंग के लिए जो IT वेस्ट मॉनिटरिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। QR कोड के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग होगी। जब तक ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग और थोड़ी नहीं होगी और तब तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है।
जहाँ तक बिहेवियरल चेंज की बात है तो लोगों में चेंजेस तो आ रहा है। हम लोग जब से जब ये काम स्टार्ट हुआ था सेग्रीगेशन, ये पहले तो कॉन्सेप्ट था नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। अभी इसमें बहुत समय लगेगा और कंटिन्यूअस इसमें आईसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक एजेंसी भी हायर कर रखी है जो कि ऑन अ डेली बेसिस जगह जगह जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में बताते हैं। तो पॉजिटिव चेंज तो आया है। हम लोगों को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। अगले 2-3 सालों में हमको लगता है कि हम लोग इसमें पूरी तरह से कर पाएंगे। हाउस होल्ड लेवल पे इसका सेग्रीगेशन 100% हो पाएगा और हमको लगता है 2-3 साल और इसमें लगेगा अभी ये करने में। कंटिन्यूअस हम लोग इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आईसी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। फर्दर हम लोग जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग भी लोगों में जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे काम हो रहा है, इसका भी अवेयरनेस लोगों में बढ़ रहा है। लोग इसको पॉजिटिवली इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम लोग हाल फिलहाल में ही हमारे ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर ने 15 दिनों का एक्सटेंसिव आईसी एक्टिविटीज़ करवाया है, जो कि 2-3 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं और अवेयरनेस भी बढ़ रहा है लोगों में और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Mr. Prabhakar. And it's really nice to know that you are doing IC activity in a very structured format, and we all agree that the kind of change that we expect in the society on segregation of waste at source, it is going to take time. It will not happen overnight. People are basically tuned to this kind of use and throw and one dustbin kind of a thing, that it is simply not possible to expect any change within 6 months or 1 year or so. Yes, you have very rightly pointed out that at least couple of years we would need. Thank you for your valuable inputs. I would now switch to Mr. Paras Gupta. Parasji is the Director EPR and Sustainability, GEM Enviro. Mr. Gupta is one of the key person in GEM Enviro, and he's leading it from the front when it comes to undertaking EPR. His organization is one of the waste management agencies working with the leading brands on implementation of EPR. Mr. Gupta, you have heard both the regulators and the municipal authorities coming out very clearly saying that there are certain on-ground challenges when it comes to implementation of segregation at source. We also need to be mindful of what alternatives we are creating. Now, since you are engaged in EPR and sustainability, what is your take in terms of how you see partnerships? Because now I'm going forward. We have heard regulators. Now you are people who are working with all these agencies day in day out. So what is your experience in terms of what are the key opportunities you see for public-private partnership, if I may say? Over to you. Thank you, Kamal. Thank you, Akram, for this again the beautiful session, and my regards to all the dignitaries and all the people. So, Kamal, my input will be, we were working from the time when even the policymakers didn't know what the policies would be there, how to take it forward, and what are the really ground challenges. So we started working much before in 2013 and 15. We started on the ground level. These were the challenges. We were reporting the challenges to the different people, to the different stakeholders, and then the government came up with the PWM 2016. People started talking. We were the one who were going to the SPCB, to the municipals, how the things could be done. So we have seen a lot of changes. We are very proud. Like what we are now talking are very much advanced stage. Basically, where from we started, there was nothing. Even people didn't know plastic, what type of plastic would be there, how to manage them, what are the processes to manage them, and really all the people from the all where even. When it started, it was only in the West, in the Maharashtra was taking up, then some parts in the Punjab was taking up, or some, pickpockets were taking up all the things. And now I am seeing a lot of synergies coming from the East sector. They are leading. From the last year, I see
all these people are doing a beautiful work, and they are leading now the taking forward all these things. So at many levels, people have started talking, knowing the subject, knowing the solutions. Only the thing is, more and more of the efforts and the coordinations have to be there between the people and the government, and that are coming out. If we look individually around us also, we feel that air. Okay, now the dry waste, wet waste, somewhere something is happening on the ground level, and that is being addressed to the many extent. So I feel very proud that in these 4 or 5 years we have come to the stage where at least we all know the challenges are there, these things have to be done, and we have come up to 50%. We have achieved. Now only the 50% is more of the coordination, better coordination, not coordination, better synchronization of all the things around us, better coordination of all the efforts, and bringing them all into the formal sectors in a more systemized sector. So even if we are talking about the lowest level, rec picker, even the people didn't know who the rec picker were, who were the aggregators were, who were the recyclers were. So all things are now coming in a chain, and that is all things are addressed, and no one is being left out, thrown out of the chain, like sir has said. Everyone is growing with that path and making something beautiful again, which is impacting our environment, impacting our the landfills, impacting. We can see huge landfills, even if we know the solutions. So solutions are there. I'm very positive in next 2-3 years. Now the platform has been built at all the places. Now in next 2-3 years, we will see a huge gap, huge change in the around us only handling this thing. So now more and more people are coming in, more and more professionals are coming in, more and more things are being addressed in the right ways. So as in the industry, part of the industry, I'm very proud to say now all the people are talking about it, taking care about it, finding the solutions, and we are growing and addressing the problem in the right manner at this time. So that would be my submission. So I am very submitting it this way. Now I am very positive. In 5 years we have taken this to build. In next 2-3 years, the things would change drastically in a very good way. So in a nutshell, what I could understand is that a lot of stakeholders have already been mobilized in the last 4 or 5 years, and there are existing partnership, but now we need to scale these things. We have to Yes. bring synergies what we have, the momentums that all the stakeholders have been. So for example, municipalities have got a very clear mandate on Swachh Bharat, Swachh Sarvekshan. Industry is working on EPR. You guys have created a lot of capacities, strength over the last 5 years. So now is a time that we scale these initiatives. We have very clear, stretchable, limits, stretchable targets for sets for ourselves, and take this job to a next level. Thank you, Mr. Gupta. So we would also have Mr. Amrendra Kumar, full-time director, Ramki, which is now Re-Sustainability. We also have Mr. Ashish Jain, Director, Indian Pollution Control Association. Ashish, you can also switch on your camera. Mr. Rakesh Mishra is yet to join, and we would call him. Yeah, Ashish, yes. Yeah, Ashish, seems you are at Lopera. Oh, great. It's a nice place. Thank you. Okay. Okay. So Ashish is joining us right from the heart of Delhi, near India Gate. It is one of my favorite cafes as well. So I would switch to Amrendra ji. Amrendra ji, your organization is now, what I may say, what we are discussing, that we have to scale, but I think your organization is already on the job. You have redesigned your organizations to take up specifically the technology that you are
trying to leverage what I could share. But we would like to hear from you what all is going on at the end of Ramki, because Ramki is one of the a very big organization. Whether it's come to any type of waste handling, Ramki is there. So what is your take in terms of scaling these initiatives to the next level? Because now we have listened from all the stakeholders, and they have come to a level. There is a momentum in every part of the ecosystem, but how we actually take benefit out of this overall momentum? Over to you. Thank you, Kamalji. And before I start, just wanted to be sure whether I'm clearly audible to everybody. Because like Ashish, I'm also joining from a cafe. So just wanted to be sure of if my network is good enough. Yes, we also hearing a lot of nice music at the back end. Thank you. I think it will add some diversity to the program. But apologies, I was forced to join from a location where I'm really not the ideal one. But yes, I think the topic we are discussing, I think there cannot be a better place than any place to talk about this in the country. So I think what you rightly said, Ramki is now re-sustainability. That's how we have rebranded ourselves as a company. And one of the objectives of this rebranding exercise, when it was been conceptualized, was to make this company more tech-centric, to make this company more scale-centric. We already operate at a lot of scale, but I think going forward, there is a need for even creating larger impact at scale. So impact at scale has always been a cornerstone for Ramki, and now which is re-christened as Re-Sustainability Limited. Now, specifically coming to this entire concept of waste management and then the changes which are happening, I completely agree with what Parasji said, and even before that, what was shared by the other colleagues from the bureaucracy, that over the last 4 or 5 years, lot of work has happened in this field. Lot of investment, both in terms of time, effort, money, has gone into creating that kind of awareness in this segment. And what as a company, we believe that next 4 to 5 years, everything is going to just get accelerated at a much higher pace than what has happened in the past. And we will start seeing a huge impact at scale, not only created by 1 or 2 organizations, but this impact will be created by all the stakeholders which are working. While we have been working in waste management for the last 25 years, the next set of changes or the next set of impact will be brought in by the stakeholders like us, the regulators, the people who are working on the ground, the people who are developing new technology in this space, the people who are working on the digital front of this space. All of them will pool in the kind of resources, investments and everything, and we will be able to see a huge impact at scale. That's something which we firmly believe as a company. And that's what we are working in this space to ensure that we incentivize the right stakeholders in this space. We provide that support to the people who are trying to create some difference. We closely work with a lot of startups to ensure that we provide them with a lot of support whenever and wherever it is required. And as a company, we have a couple of things which we are learning although we are 25 years old in this space, but we are also learning, and we are trying to leverage them for creating even a bigger impact at scale. So one of the things which is now a focus for Ramki is to look at the decentralized approach. Ramki has always been a centralized waste management model, but as a company now we are also focusing on decentralized model. How we can service large bulk waste generators, how we can service large institutional generators by providing services which are tailored to them, customized for them, and delivered at their doorsteps. That is something which we are closely working on. Second is, we have seen the impact of MRFs. MRFs, which were concept of Western countries, but then it has been brought down and scaled, adapted and adopted to work in India. So we as a company, we run MRFs in Dubai, where once the waste is loaded onto the incoming hopper, there is no touch point till the waste is getting segregated. That means the entire waste management is run through optical sensors, through robots, through camera sorters. But again, having seen that and having learned the Indian ecosystem, we are trying to bring in a synergy between these two extreme ends of the operation. So we are trying to create models which leverage the technology to make segregation efficient, but ensures that the social inclusion
of the people who have worked on the ground, who have been the working hands of the industry, they are also retained and they are socially included, and their prospects are safeguarded. That's second thing which we are working on. So AI and automation scale to Indian conditions and customized to ensure that the social inclusiveness remains even if we invest in technology. And next is in terms of while all of this is happening, how do we ensure that the biodiversity is conserved in all and everything what we do? Fourth, our important focus area is to go local. And when I say go local, it not only means to in terms of buying the equipment which are locally made. It also means incentivizing the equipment which are here through made imported, but help these companies set up manufacturing bases in India so that the cost of technology becomes lower. People have access to the technology. Not only us, but all our peers in this industry who are working on the same objective, they also get access to technology. So even now, as we speak, we are in discussion with a couple of manufacturers in Europe. We are trying to convince them that they should set up local manufacturing, bring down the cost, make equipments which are tailored to Indian conditions, and then support this entire industry in one go. And the fifth thing which we are working very closely is on policy framework and stakeholder inclusion. I think whatever said and done, this industry has been shaped to a large extent because of the right policies which has come in different points in time, policies which have been constantly being reviewed, improved, and further improved. And I'm really sure that the last 5 years, the way the things have improved, next 5 years, the improvement will be much more than what we have seen in the last 4 or 5 years. So that's another area which, as a company, we strongly believe that policy framework and stakeholder inclusion will be another important aspect of bringing and accelerating the change which has already started. So I think this is what we as a company we believe in terms of bringing this transformation by changing how as a company and as a country we can change the face of waste management in India. And next 4 or 5 years, we as a company are really excited. We are a company of very convinced that all the right boxes have already been checked. Now it is time to reap the dividends. What our investments have gone into this space, and I'm very sure that 5 years from now we will be a very, very different country as far as the waste management, waste handling, resource recovery, recycling, repurposing, all of this is concerned. That's all from my end. Very happy to take any questions going forward. Thank you. Thank you, Amrendra ji. You very well pointed out. Your vision, how Ramki is scaling its initiative, and I would like to take up 2 points from your talk. One is the deployment of right set of technology, because technology is something which would enable us to scale, and second is the adaptation to the Indian needs. Because we can talk about Western concepts, Western infrastructure, but we need to look at how India works and what works in India. So, and that's where I think organizations like yours who have been working on this issue from decades, your expertise is definitely going to help the country. Thank you so much. I would now switch to Ashish. Ashish is running an organization which is not only into the space of plastics, but on air pollution, but on anything you talk about environment, Ashish is there. So, Ashish organization is there. So, recently he has been awarded by Delhi Police Women Welfare Association, and more or less, if I may say, Ashish has been one of the key partners for Punjab Plastic Waste Management Society, PPWMS, over the last 2-3 years on managing the waste, and also he has pretty good experience how industry consortiums can play their role when it comes to plastic waste management. So, Ashish, my question to you would be that, in your opinion, and top 2 agendas you think would help in scaling the initiatives that we have today? And number 2 question is, how do you see that role of, because we are seeing the plethora of information technology service providers who are claiming that they can, give a visibility of every ton of plastic waste. What is your take on that?
We would like to listen from you. Over to you, Ashish. Yeah, thank you, Kamal, and good afternoon to everyone. Uh, so first of all, I totally agree with Mr. Amredra that we have very bright future, and Indian scenario with respect to waste management is going to change. And in last 4 5 years, after the launch of Swachh Bharat mission, we have set up the base, and now whatever we will do in coming days or coming month or year, that will execute at a very high acceleration rate. So now we will see the tangible impact or tangible changes in our society and our working, because the base has been set. There means when you set up the base, you need some more time to change the or to set up the base. But after setting up the base, whatever you do, it will come very faster. Results will come at a very fast rate. You asked me what are the major challenge or initiative. So I think waste is being generated by the common man. So all living organisms generate waste, and without their participation, we won't be able to achieve whatever we want to achieve. So technology is good, and technology also enabling us to achieve our targets in a very efficient manner. But technology also a very material specific. Technology need a segregated waste. So unless until community or the waste generator uh, get participate or get associated with the plan action plan prepared by different state authority or different brand owners or the ULB, we won't be able to achieve 100% this thing. So I think all of us need to focus how to bring community participation into the system, and how to ensure 100% segregation of waste at source, and how to ensure zero littering of waste. So zero littering and the source segregation from me is the major challenge in the waste management system, because if we stop littering, we won't see waste on roadside, and we won't consider waste as an issue. Then suppose it's a scenario, everybody puts waste in a dustbin, and from dustbin someone will collect and channelize to the different recyclers or different destinations. So it will be easy to collect waste from dustbin, then it will get channelized to MRF for further segregation, and then it will send to the respective recycling or co-processing industry, and we won't find issue with the waste, whether it is plastic, paper, or metal. Means if there is no waste on the road, open area, drains, rivers, then who will talk about the waste? So littering is the biggest thing, and we have to bring change in our lifestyle, and each one has to contribute toward the growth of the nation. So that is very critical, and we have to put a lot of energy in bringing the change in our society. And then once the society adopt this mechanism of source segregation, zero littering, zero burning, and become sensitive toward the waste management, what to do, or what to consume, how to consume, and consume only essential goods. So there are a lot of things which a common man need to do. The technology persons or the agencies who are involved in waste management agency, they can provide only services. They can only collect waste from different sources, and recycler can only recycle some specific quantity of waste. Co-processor, municipality role is also limited. But all these agencies or these technologies are totally depend on the common man behavior. If common man behavior doesn't change, so we keep on face lot of challenges in implementing those technologies and systems. So we 100% need their support, and we whatever we plan to improve the waste management scenario, we should include all these community people, and we should have different IC material or training module for different kind of um, community. We are changing languages after 100 kilometer distance. So training modules also need to be very flexible. They need the developer of IC material need to understand the need of community, understand the languages barrier in the community. So some are literate, some are illiterate. So our IC design should be very appropriate and match the need of the community. So that's how we can bring the change. And the IC campaign need to be very aggressive. It should not be a symbolic event.
कि एक दिन हमने अर्थ डे सेलिब्रेट कर दिया, एक दिन हमने जून environment day celebrate kar diya, and we thought we reaches to the masses. It has to be a continuous practice from everybody. It's not only the responsibility of ULB or state government or central government. Each stakeholder, each important stakeholder, including WMA, brand owners, importers, producers, ULBs, Gram Panchayat, state authority, state pollution control board, central pollution control board, all have to give enough time to create awareness in the society, and then we can definitely achieve what we want to achieve in waste management sector. So that's my take on this. Okay, thank you, Ashish. And if I could figure out one point, a distinct point is that we can talk about technologies who would collect the segregated waste, and then we can deploy best technologies for their recycling. But the basic technology that doesn't need a technology is a segregation of waste at source. Yeah, I just need a willingness. If that happens, responsibility as a means if we start respond like a responsible citizen of the country, and if we start taking ownership to the environment and society and nation. So the major challenge, the current time means in today time, my belongingness is to my own thing. Like I am, this laptop belongs to me. I own this laptop. I don't own this Lopera cafe. So I'm allowed to do whatever I want to do with Lopera. I can drop anything here, but obviously staff over here will not allow me to do. So they belongs this area, I belongs my area. So we have to break this myth. So this is my country, this is my city, and I will not let anybody to pollute my city. So that's kind of responsibility we have to bring in ourselves, and that's only we can bring the change. And that change come from me. I have to change myself, and then can expect someone to change. Very well pointed. Very well said, Ashish. And thank you, Ashish, for very thoughtful, comments. And I hope people who are joining us online through this online conference would have been really enjoying the session. And now I would invite Mr. Rakesh Mishra, who is the head of Mishra Traders, to please come online. Mr. Mishra, you can switch on your camera and mic, please. Thank you. Your mic is muted, sir. You can, yeah. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you, Mr. Mishra, for being able to join us. I know you have been busy traveling, but still you are making time. Yes. So I would. So you would have heard the other panelists, your co-panelists, in the session, and you have been basically, your organization is looking to the scaling of EPR. You have a lot of plans to it. Now, where do you see? Because I'm also setting the foundation for our next session, which is about alternative packaging for the effective SUP phase out. So, there are a lot of actions on ground. There are a lot of entrepreneurs coming up when it comes to alternative packaging. How do you see, these kind of initiatives? Because, and when waste like alternatives to come and biodegradable plastic come, do you think that, number one, these biodegradable, I'm not an expert on that portion, but when it comes to biodegradable, those kind of the organic content is going to increase in the overall solid waste, and the systems that you have at your end, whether that is going to impact or that is going to be a very big relief for you, that you are now the plastics that you are getting is more recyclable, more thickness which is there,
कमल And थोड़ा सा you हिंदी में अगर बोल you since hello या कमल अगर हिंदी में आप थोड़ा सा बोल सकते हैं तो अच्छा अच्छा मिश्रा जी, so I'm sincerely sorry for that. हिंदी में भी बात कर सकते हैं सर। तो जैसे अपना जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है अब ये रिप्लेस होने वाला है, अब इसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात आ रही है और तरीके के प्रोडक्ट्स अब आएंगे, उसको रिप्लेस होगा तो वो आएंगे। डू यू सी दैट कि अभी जो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि प्लास्टिक की थैली का वो थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्लास्टिक वेस्ट अब आपके पास आया करेगा, वेदर यू थिंक दैट दिस वुड हेल्प यू इन सम वे, और डू यू थिंक दैट एसयूपी का ईपीआर से या प्लास्टिक वेस्ट से कोई खास लिंकेज नहीं है? बिकॉज बिकॉज वी हैव बीन हियरिंग दैट, हम लोग ये सुन रहे थे कि ये जो सब किया गया है, एसयूपी में बैन लाए हैं, पन्नी की थिकनेस बढ़ाई गई है, ये इसलिए बढ़ाई गई है ताकि वेस्ट वर्कर्स जो है उसको आसानी से पिकअप कर लें, वेस्ट अच्छे से सेग्रीगेट हो जाए, और ये सारा रैशनल दिया गया। हाउ डू यू सी एज अ प्रैक्टिशनर, डू यू थिंक दैट यस ये सारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो अभी रेगुलेशन ला रहे हैं ये प्लास्टिक वेस्ट में भी हेल्प करने वाले हैं? ओवर टू यू सर। बिल्कुल सही है कि चूंकि 1 जुलाई से ये पूरी तरह से बैन हो रहा है, और अगर हम सिंगल यूज को अगर बिल्कुल बंद कर दें तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो थिकनेस की बात आ रही है वो सिर्फ ये कि वो जो हमारा लेबर जाएगा या कि जो लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो अपन आज से लगभग 20 साल पहले के पैटर्न में जाए कि अपन जब सब्जी लेने जाते थे तो झोला लेकर के जाते थे, अब बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। हमें मालूम कि बाजार में वो थैली आलू वाला, सब्जी वाला, किराना वाला देगा। किराना की दुकान में जाते थे तो वो पेपर के बैग, जो पेपर के जो वो रैपर होते थे उसके अंदर पेपर में वो शक्कर का भी वजन करता था, चाय पत्ती भी डालता था और सारी चीजें वो डाल करके देते थे। लेकिन एक नया मॉडल आया, इसको आधुनिकता का मॉडल कहा जाए कि नहीं, हमें जो है तो यार थैली में चाहिए। ये जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैन तो है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी बाजार में आ रहा है। लोगों को जब तक अपने पर्यावरण से ये नहीं होगा कि ये पर्यावरण हमारा है, कल के दिन हमारे बच्चे इससे कितना दूषित हो गए, कितनी प्रकार की गंभीर बीमारियां, हमको सांस लेने में कितनी दिक्कत जाएगी, हमें ऑक्सीजन, अभी कोविड ने बता दिया कि वास्तव में पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं है, पर्यावरण की है वैल्यू। जब पूरी तरह से पहला लॉकडाउन हुआ उस समय वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हवा ऐसी होनी चाहिए, आसमान कभी इतना नीला नहीं दिखा जितना उस टाइम में दिखा 1 महीने के पहले लॉकडाउन के अंदर। तो ये क्लाइमेट में धीरे धीरे लोगों उदाहरण हमारा मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर है कि लोगों के अंदर जागरूकता इंदौर मॉडल में होना चाहिए, भोपाल मॉडल में होना चाहिए। मैं आपसे प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ कि जब ये दूसरी बार जो है तो इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन में पहला स्थान रैंकिंग आई, तो मैं इंदौर में था उस टाइम में। मैं मतलब एक वहां पे मूंगफली ऐसे मिलती है जैसे अपना ये गीला कच्ची मूंगफली, मैंने 10 रुपए का लिया उससे, और पेपर में पकाया था, पेपर के उसमें पाउच में उसने दिया, और मैं वहीं पे छील करके, अच्छा उसको मैं मतलब छील करके वो फेंकने वाला था, वो ठेले वाले ने बोला भाई साहब बिल्कुल फेंकिए मत। उसने 3 डस्टबिन अपने ठेले के तीनों तरफ लगा रखी थी, और वो मतलब कितना एक्टिव था कि वो मतलब मेरे को बोला बोला हाथ जोड़ करके भाई साहब इस डिब्बे में आप डालो, नहीं तो निगम वाले अगर देखेंगे तो 500 रुपए का फाइन करेंगे, मेरी इतनी दिन भर की इनकम नहीं है। तो ये हुआ, ये नहीं कि हम सरकार का जो जो माल है सरकार का वो सब हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, और हमारा पर्यावरण जो है तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए होना चाहिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या कि कोई भी ऐसी चीज हो, मुझे लगता है कि जब तक उसमें जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जी 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 बिल्कुल। और आई थिंक आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ उठाया है वो ये, जो हम लोग कन्वीनियंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कन्वीनियंस के नाम पे हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, और जिसमें एक बेसिक हम
चाहते हैं कि हम जहाँ पर भी जाएं हमें एक पॉलिथीन बिल्कुल बैग हमको दो कपड़े मिल जाए। अपने यहाँ इतने कपड़े पुराने होते हैं, उसको उठा करके आदमी फेंक देता है, तो उसी का जो है झोला बना करके खरीद करके, जैसे अब इन्वायरमेंट डे हो या कोई भी डे हो, उसमें जनरली आदमी जो बांट देता है कि भाई हमने 200 झोले बांटे। तो ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए भाई। हम अगर किसी भी वर्क को कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हमारा ये होना चाहिए कि हर हफ्ते संडे को ज्यादा लोग आते हैं मंडी में। अभी हम एक इवेंट चालू करने वाले हैं, और वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही गाइडेंस में, तो उसमें हम ये कि हर संडे को लगभग बोले मंडी होगी जहाँ पे लोग आते हैं, उनको देना कि ये हमें बांटना ही बांटना है। तो ये चीजें जब तक लोगों के अंदर फीलिंग नहीं आएगी, अभी लोग मतलब उनको अंदर से शर्म सी महसूस होती है, यार मैं झोला लेके जाऊं। उनको ये लगता है कि मैं झोला लेके जाऊं, मेरे को तो वहीं मिल जाएगा, और उससे पन्नी मांगते। आप पन्नी मांगना बंद कर दीजिए, प्रोडक्शन बंद हो जाए। सिंगल यूज अगर खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए। जी जी। तो मेरी तरफ से यही है। Thank you. Thank you, Mishra ji. Thank you for your contribution, and we hope to continue working with you. So I think we had a very good discussion in this panel. I would like to thank all the panelists for this session. I myself really enjoyed talking to each one of you. Dr. Arup Kumar Mishra, Chairman, State Pollution Control Board, Assam. Dr. Bishu Karmakar, Member Secretary, Tripura State Pollution Control Board. Mohammad Shahab Yahya, Deputy Municipal Commissioner, Gaya Nagar Nigam, Bihar. Dr. Ashok Kumar Ghosh, who planned to join but couldn't, but we would be in touch with you, sir. Mr. Amrendra Kumar, Full-Time Director, RAMKI. Mr. Ashish Jain, Director, IPCA. Mr. Paras Gupta, Director, APR and Sustainability, GEM Enviro. And Mr. Rakesh Mishra, Head Mishra Traders. Thank you to each one of you for joining in. I would now switch to our next session. I hope all the participants who have been listening to us, watching us live on the web portal would have been looking forward to the next session, which is going to be very interesting. We have a series of industry leaders and regulators on the dais. So this session is about alternative packaging for effective SUP phase out. So this is where we are going to take our discussions to. We have Dr. Gopal Pradhan, Member Secretary, Sikkim State Pollution Control Board. Welcome, Dr. Pradhan. You may wish to switch on your camera and mic, please. Shri M.L. Patel, Superintending Engineer, Madhya Pradesh Pollution Control Board. Ms. Riya Majumdar Singhal, Founder and CEO, EcoWare India. And Mr. Anurag Tiwari, co-founder of Recard Private Limited. Thank you to all the dignitaries for joining us for this session during the day. We have been blessed enough to have participation from Honorable Mayor of Patna Municipal Corporation and Deputy Mayor of Ranchi Municipal Corporation. This is an Eastern Region workshop we are doing today. WeCare has been doing similar regional dialogues, and today is a time for Eastern Region. So a warm welcome to all of you. Dr. Gopal Pradhan, thank you so much, sir, for joining in. A warm welcome, sir. I would start with you, not taking much of your time. We would like to listen from you that what all Sikkim has its plan, because Sikkim is one of the leaders when it comes to environmental sustainability, whether it comes to organic farming, whether it comes to people living near to the nature. Sikkim is always at the front. So we would like to hear from you, sir, that on the plastic side, what have been the initiatives or the plans of your department? Over to you, sir. Thank you, Mr. Sharma. Very good still morning to all of you. It's indeed a pleasure for me to
participate in this program. And I take this opportunity to thank WeCare Foundation and the Policy Time for having organized this program. Am I audible, Mr. Sharma? Am I audible? Yes, sir. Yes. Very Yes, sir. Yes, sir. We have all heard that plastic is a necessary evil. Yeah, it came true in the case of the state of Sikkim. Way back in the year 1997, a landslide triggered by choking of the Joras led to loss of life and a loss of huge property. This was an eye-opener for the government of Sikkim. Then there was a demand from the civil society, let us all ban plastics because it took precious life of our state. This led to the bringing out of the notification in the year 1998, thereby making Sikkim the first state in the country. It was ecologically desirable, socially acceptable, and had a political will. That was the success of this notification. Yeah, we moved on with this notification. Then the market started flooding with new items. People had the power to purchase, things were available. And slowly we saw the littering of the environment. This led to aesthetic pollution. Gangtok, the capital town of Sikkim, which was emerging as a tourist destination, was not in favor of all these items. Then the government came up with a resolution and with an aim that let us begin from the side of the government. Then the government brought out a notification saying that let us from our side stop using plastic items in government offices and government functions and government programs. Then slowly the government came up with another notification because there were plastic items being littered everywhere, especially the single-use plastics, the styrofoam items, the cutlery, the plates, the glasses. And we were of the impression that if this is the way, then what are we going to give it to the tourists? Because we don't have that high scrapper buildings. What we possess was a clean environment. This is what led to the government to come up with different notifications. We discouraged the civil society from using the items made up of plastics in the functions like the pujas and other occasions also. Let us all go organic. That was the aim of the government. Then, by that time, people were not knowing whether those plastics were single-use or multiple-use. Because for some, the single-use plastics were also multiple-use plastics. But the quantity of waste being generated did not have the mechanism to be recollected and phased out and also go for recycling and all. Sikkim then thought, like, let us come up with some proposals so that we may have some alternatives for single-use plastics. The first and foremost thing that we did was like we discouraged the use of plastics by way of appealing to the people. That was from the side of the state government, the policy makers, the regulators and all, they all wanted, we approached the educational institutions because if the children can be educated, then no parents can force them to use plastics. That was our idea. So we took the help of the children. Why don't you take this message to your homes? This was the beginning of the history in the state of Sikkim. Today, Sikkim, as a leader in the phasing out of the plastics, when you see the sentence phasing out of single-use plastic, it is not a shot or a single shot through which we can get rid of the plastics. So there are steps to be taken. Now, ultimate, by 30th of June, we have to get rid of all the plastics.
I don't know how far we'll be successful in this endeavor of ours, but definitely it is our bounden duty to see that let us find out an alternative solutions. The advantage with Sikkim was like we don't have any manufacturing house in the state of Sikkim. And when you don't have manufacturing unit in the state, then we become a consumer state. When the government takes stake, when the people are also interested, let us do away with this, then definitely the success will go high. Success will be very high. Then started creating awareness through different medium. And one of the latest thing that the Pollution Control Board Sikkim did was we organized 1 week plastic awareness campaign or plastic awareness week, which was launched by the Honorable Chief Minister of Sikkim, Mr. P.S. Kohli. That was followed by like educating the girl child. We held marathon for girls only, which comprise around 500 members. Then recently, the civil society also they have come up. What they are doing is like whenever they are visiting the religious institutions, they are not taking their offerings in the plastic containers. So that is how they have come up from their own side also. They are also now part of the problem and they are also trying to be a part of the solution. This is the need of the hour. Today, although all these measures have been taken up by the state government, still we see the littering happening in different places. So here what I suggest is, and what I find is there is some gap between the manufacturing house and the regulators. If the manufacturing house can come up, not just by signing some campaign or like coming up with some significant campaign or some awareness, 1 day awareness, it has to be a sustainable move. So if we are united, I'm definitely sure that we'll have a very successful phasing out of the single-use plastics. The board also formed committees comprising of the people from the Rural Development Department, the Environment Department, the Urban Development Departments. And district-wise, we try to have resource recovery centers where the plastics items have been collected. But the problem with us is since ours is a consumer state, we don't have the facility to bring into the people who are engaged in the recycling, people who can take away all these products. And because plastic waste is not a waste, it is a resource out of this. So we need to work on that also. And one important thing that the government of Sikkim has done is we have invited proposals for alternative estimation startups. This proposal has been floated by the Department of Commerce and Industry. We have invited young entrepreneurs who can come up with new ideas. They have seen, they have suffered, and they are the people who need to take the way forward. So this is what we are looking from their side also. The comprehensive action plan is in place. The state task force has already been constituted. And what we need right now is we need some people who can really lead the way. So we are trying to educate the mass also. The programs like river cleanup drive, we have also done that. And even the schools are not allowed to use plastic covers for their books and for their books and their copies also. And whatever waste that has been collected, we have taken the help of the NHITCL for road construction also. Here, one of the key roles that can be played is by the self-help groups. In order to have an alternative for the single-use plastics, if we can chip in the services of the self-help group, then I think that we are doing a good job and we will be like achieving a bigger success rate.
The need of the hour is a behavioral change. We have to change for the sake of our children and sake of our future. If you can have some changes in the day-to-day activities, then definitely we'll have a successful future also. We have also chipped in the services of the NGOs also, because they are also very worried and concerned about this matters. So they have also come into our rescue. They have also been a part in our auditing of the plastics also. We have taken up a job for the last 1.5 years that's going on, and we have formed a committee wherein we have people represented from NGOs also. So it is a group comprising of the regulators, the bureaucrats, the the civil society, and the NGOs also. I'm quite sure that this kind of works will like this kind of combination of the people will definitely face some result to us also. And when you look at the items prohibited, then I think we have some alternatives for that also. If you see in Sikkim, like areas like Lachung and Lachung, they have totally banned prior to the government of India bringing out the notification. This was the initiative taken by the community because they did not allow the tourists to come up with the plastic bottles. They arranged bamboo bottles for that. And if they wanted to take the bamboo bottles as a souvenir, that was also open for them. So this is how these things are happening in Sikkim. And what I feel like we are all a part of the problem and we need to be a part of the solution also. And for that, our work should speak louder than the actions should speak louder than the words. This is what I have to say. Let's all be united. I think if we are united together, we can achieve our goal. Thank you. This is all we have to say. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, sir. It was really nice to know the multi-pronged approach that Sikkim has been taking. And, I would, when you were speaking, I was just thinking that, over the last 2 years, the way India has fought COVID. So first, government mandated certain foundations. We were locked down. So we could hear that, people were getting very agitated, sitting in their homes and all that. But then when they had seen the aftermath of second wave, people were self-imposing that those COVID behavior on them, because then they realized that, yes, this is important for us. And the example that you have mentioned in Sikkim, the two places, Lachung and other place, where people self-imposed the ban on single-use plastics and plastic bottles is something that we need to learn. And I think society in itself is a great driver for bringing out change. And that's where we all need to work collectively. As a regulator, you can facilitate through some bringing out some policy directions, but ultimately it is the responsibility of each of us. As you said, each one of us is a problem, and each one of us can be a part of the solution. So we have to look at how each one of us can be a part of the solution. We can take a responsibility on ourselves. So thank you so much, sir, for your such very insightful actions that have been taken by Sikkim. And we look forward to learn more from Sikkim as you move forward. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Sharma. Thank you so much. Thank you. I would now request Shri M.L. Patel, Superintending Engineer, Madhya Pradesh Pollution Control Board. Welcome, Mr. Patel, for the session. And from the day along,
I'm sure you were there on that. You have heard earlier speakers. I mean, the kind of energy that I could see right now is that people are looking for solutions. I mean, what is the solution? What is the techno, commercially solution when it comes to alternatives to plastics? Now, you are handling all these issues as a regulator day in, day out. How do you see, some kind of, do you see that some entrepreneurs coming up in Madhya Pradesh, or do you see some states bringing up some policies for these entrepreneurs? Because when any entrepreneur comes, he, number one, ensure that there is some market over there. Now, these rules have created a market for alternatives to plastic. Market is there, but when it comes to creating a facility, running a facility, an entrepreneur, in the initial in the initial stage, look forward to those kind of support or incentive schemes. Do you think that there is some role or function that can be undertaken by any of the government department, not only Pollution Control Board, but I mean, and overall your experience around? Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। ये अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मैं काफी देर से आपके यहाँ सुन रहा हूँ, अच्छे वक्ता आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी नई चीज नहीं बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें जो हम आपस में जानते हैं और समझते भी हैं उन चीजों को, केवल कई बार क्या होता है कि हम जब डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें लाइट में आती हैं, और जब लाइट में आती हैं, हमारे संज्ञान में आती हैं, कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में आती हैं और हम सोचते हैं कि तो बड़ा आसान था और आसानी से हम कर सकते हैं। तो वो विचार बनाना ही मैन है। नियम का उद्देश्य या किसी भी कानून का उद्देश्य भी ये होता है कि हम सोसाइटी को लॉफुल बना दें। कोई भी नियम तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक कि वो लॉफुल ना हो। लॉफुल मीन्स होता है कि वो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करे उस चीज को, वो बैकग्राउंड तैयार करना हम सबका दायित्व होता है। तो इसलिए इन चीजों पे हम पॉइंट वाइज 8-10 पॉइंट हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, और जो आज की डेट में हम जिनको PRO कहते हैं, एक्चुअली दे आर द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, और वो वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि इकोलॉजी का जो प्रिंसिपल होता है, इकोलॉजी का प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि नथिंग इज वेस्ट। कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, केवल हमारे दिमाग में वो वेस्ट होती है क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वेस्ट इज ए मिसप्लेस्ड रिसोर्स। कहीं जहां उसे होना चाहिए था वहां नहीं है, इसलिए वो वेस्ट है। अगर उसकी सही जगह पे हम ले जाएं तो वो वेस्ट नहीं रहेगा, वो एक रिसोर्स बन जाएगा। तो यही काम हमारे आज PRO जो कर रहे हैं, या WeCare जैसी संस्थाएं जो जन जागृति पैदा कर रही हैं लोगों में, उनका उद्देश्य भी वही है। और वो काम जो सोसाइटी को बहुत ही आवश्यक है, वो काम अब शुरू हुआ है। अभी तक क्या होता था कि नियम बनता था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डंडा चलाना शुरू कर देते थे। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी बदली है, अब समय भी बदला है और लोगों का नजरिया भी बदला है। अब आप ये देखिए कि 1 जुलाई 2022 से हमको प्रतिबंधित करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को, और हम 2018 से इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मतलब 4 साल कंटिन्यूअस डिस्कशन किसी चीज पे हो तो नेचुरली हर आदमी के दिमाग में वो चीज जाएगी, और जब जाएगी तो वो समझेगा उस चीज को। तो ये एक्चुअली जो मेन प्रिंसिपल है, थिंग्स कम्स फ्रॉम नोवेयर। कोई भी चीज कहीं से आती नहीं है, सारी चीजें हमारे पास में है। केवल ये होता है कि एक चीज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो लॉस नहीं हो सकती है। और दूसरा उनका कहना है, इकोलॉजी के सिद्धांत कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अगर हमने वेस्ट को नापना शुरू कर दिया तो वेस्ट को मिनिमाइज करना भी हम शुरू कर सकते हैं। तो ये मुख्य प्रिंसिपल्स यही है कि हम ये मान के चले कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। प्लास्टिक, जहां तक प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का। बिना प्लास्टिक के हम, मुझे नहीं लगता है कि अपनी आज की भौतिक जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द वेस्ट। जहां हमने वेस्ट कहना शुरू किया वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
तो इसलिए क्या है कि हमें ये साइकोलॉजी बदलना है। अगर हमें ये सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि साहब प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट ए वेस्ट, इट इज ए रिसोर्स फॉर समथिंग, और हम उसको यहां से उठा के वहां ले जाएं तो वो रिसोर्स बन जाएगा। तो जो इस नियम जो अभी आया है, उस नियम का उद्देश्य भी यही है कि हम सोसाइटी में ये प्रतिपादित कर सकते हैं कि साहब एक तो ये वेस्ट नहीं है, रिसोर्स है, इसको आप रिसोर्स की तरफ ले जाइए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसी जगह वेस्ट बन भी गया है तो कोशिश करिए कि उसको हम सही स्थान पर लेके जाएं। थोड़ा सा चूंकि मैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं पहले से अपने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के बारे में आपको एक डेटा दे दूं, क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, जब तक हम मेजर नहीं करें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में हम देखें कि अगर हम टोटल सॉलिड वेस्ट काउंट करें, कंप्लीट, चाहे हैजार्डस हो, बायोमेडिकल हो या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, ये सारे के सारे जितने सॉलिड वेस्ट होते हैं, सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को अगर हम काउंट कर लें तो अराउंड 90% जो होता है वो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। केवल 10% जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट है, और लगभग 9.25% हैजार्डस वेस्ट है और 0.25% बायोमेडिकल वेस्ट है। अब आप देखिए कि अगर हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर लिया तो हमारा लगभग 90% सॉलिड वेस्ट मैनेज हो जाएगा। तो हमारा कंसंट्रेशन वही है, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट एज ए इंडिविजुअल एंटिटी जनरेट नहीं होता है, ये जनरेट होता है थ्रू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और ये इसका जनरेशन अगर आप देखेंगे, हम सिर्फ अर्बन सेक्टर को लें, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में आज भी प्लास्टिक वेस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब अगर हमारा ध्यान ना भी जाएगा रूरल एरियाज की तरफ, हम सिर्फ अर्बन प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम मैनेज कर लें तो मुझे लगता है कि इट विल कंट्रीब्यूट अराउंड 85 to 90%। केवल 10% प्लास्टिक वेस्ट जो होता है जनरेट होता है वो रूरल एरियाज से होता है, जबकि उल्टा है कि 70% रूरल एरियाज की पॉपुलेशन है और 30% अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है। मतलब 30% अर्बन 30% पॉपुलेशन लगभग 85% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, और 70% पॉपुलेशन केवल 30% 15% या 20% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो अगर हम कंसंट्रेट करें केवल अर्बन एरियाज की तरफ तो इसका मैनेजमेंट बड़ा इजी हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के सिनेरियो में देखें तो हमारे पूरे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमारे यहाँ लगभग 403 नगर पालिकाएं या नगर परिषदें हैं मध्य प्रदेश में, और इनमें अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो 16 नगर पालिक निगम है, और उन 16 नगर पालिकाओं से लगभग 55% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। मतलब 403 नगरीय निकायों में से 55% प्लास्टिक वेस्ट केवल 16 इकाइयों से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम 16 को कंसीडर कर लेंगे और 16 को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम 55% ऑफ द टोटल अर्बन प्लास्टिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल कि मेजर थ्रस्ट हमें कहां देना है। हम 70% पॉपुलेशन में 15% प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करें, या 55% प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए केवल 16 या 10% पॉपुलेशन में हम अपनी एनर्जी खर्च करें, कहां पे मैक्सिमम आउटकम हो सकता है। तो इनिशिएशन के लिए हमको यहां से जाना पड़ेगा। तो हमने थ्रस्ट दिया है अपने अर्बन लोकल बॉडीज में भी नगर पालिक निगम, क्योंकि आप ये देखें इनमें भी जनरेशन आप देखें पॉपुलेशन और लिविंग हैबिट्स के हिसाब से इनमें बदलता रहता है। हमारे जो भी नगर निगम है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख के लगभग, इससे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है भी नहीं किसी इकाई की। इंदौर हमारा सबसे बड़ा नगर पालिक निगम है जहां पे लगभग 22-25 लाख के लगभग पॉपुलेशन आती है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 12% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ MSW। लेकिन वहीं भोपाल देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन 15 लाख 16 लाख के लगभग है, ये इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 8 to 10%। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं जहां पॉपुलेशन 3 लाख 4 लाख है, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन होता है अराउंड 6% 6.5%। अगर हम नगर परिषदों में चले जाएं जहां पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 20,000 50,000 के आसपास होती है, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट का कंट्रीब्यूशन केवल 4 से 4.5% होता है।
और जो छोटी नगर पालिका है वहां पे लगभग 2.5% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कंपोजिशन में। तो आप देखिए अगर हम ग्राम पंचायत में चले जाएंगे इट माइट नॉट बी मोर देन 1.5% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये हमारी हैबिट्स जो होती हैं, रहने की आदतें जो होती हैं, या हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस जो होता है, उसके कारण प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन बदलता है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ लिविंग इज वेरी गुड, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन विल बी वेरी हाई। अगर हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी पुअर हैं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन भी बहुत ही कम होगा। आप देखिए गांव में अगर उनको एक प्लास्टिक का थैला मिल जाएगा तो हो सकता है वो 2-4 महीने तक उसी को रिसाइकिल करते, उसी को यूज करते रहेंगे। मींस रीयूजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक दिन में 50 पॉलीथीन लेके आते हैं और उसको फेंक देते हैं। गांव में आज भी अगर डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं, हो सकता है उसको धो के वो 2-4 बार भी यूज कर लें। वहां पे एक साइकोलॉजी है, उनकी सेविंग की साइकोलॉजी है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, रहने का तरीका बदलता है, वैसे वैसे प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन बदलता रहता है। और या जैसे जैसे अगर इनडायरेक्टली हम कहें, जैसे जैसे साइज ऑफ द सिटी बढ़ती है, वैसे वैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स बदलते हैं या इम्प्रूव होते हैं। या हम फिजिकल भाषा में कहें तो इम्प्रूव होते हैं, लेकिन अगर सोशल लाइफ में कहें तो एक्चुअली डिग्रेड होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को यूज एंड थ्रो की कैपेसिटी में लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज को बदलने के लिए ही आज हमें काम करना है। और जो हम आगे जो रूल्स आ गए हैं या जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि हम जो 5 Rs हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 R की थ्योरी दी है, जिसमें रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवरी और रिसाइकल। इसका सबसे पहला पार्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज की डेफिनेशन 2 तरह की होती है। एक तो जो वैज्ञानिक तरह से डिफाइन किया है इसको, रिफ्यूज टू रिसीव मटेरियल फ्रॉम अननेसेसरी पैकेजिंग दैट यू लेटर हैव टू पे फॉर इट्स डिस्पोजल। मींस अगर हम किसी भी चीज को रिफ्यूजल में डाल दें, अगर हमने कहा साहब मेरे को प्लास्टिक कैरी बैग नहीं चाहिए, मैं रिफ्यूज करने की कैपेसिटी अगर मैंने जनरेट कर ली, नेचुरली सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, कि आप रिफ्यूज करना शुरू करें। अगर हमने कहा साहब अगर हमें 5 किलो बिस्किट लानी है, तो हम 5 किलो के 5 पैकेट ना ला के 5 किलो का 1 पैकेट अगर ले आएंगे, अगर कंजम्पशन हमारा 5 किलो का है, तो नेचुरली उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिफ्यूजल के लिए हैबिट्स डालना पड़ेगी। और सिंगल यूज प्लास्टिक में सबसे बड़ा फैक्टर भी यही है कि अगर हमने रिफ्यूज करना सीख लिया, सब हम प्लास्टिक की क्रॉकरी में तो नहीं खाएंगे, या प्लास्टिक की प्लेट में तो हम खाना नहीं खाएंगे, या प्लास्टिक के ग्लास में तो हम पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ एक रिफ्यूजल हमने डाल दिया, तो नेचुरली पूरी सोसाइटी से सिंगल यूज प्लास्टिक अपने आप आउट होना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम आउट करने की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये आउट आया क्यों। ऐसा मटेरियल, मतलब आप सोचिए प्लास्टिक, जो कि मेरे ख्याल से ये 1907 में इन्वेंट हुआ था सोशल यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए केवल 1907 में इसका इन्वेंशन हुआ, और 1960 आते आते तक केवल 53 इयर्स में इसने सोसाइटी पे कब्जा कर लिया। मतलब आज आप देखिए कि आज हम क्या बिना प्लास्टिक के कल्पना कर सकते हैं हमारी लाइफ की। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे हाथ में एक प्लास्टिक का ब्रश होता है, शाम को जब हम सोते हैं तो प्लास्टिक, हमारे बाजू में जो भी रैक होती है उसके भी ऊपर भी प्लास्टिक होता है, और सामने टीवी जो देखते रहते हैं, वो आजकल हैबिट है टीवी देखते देखते सोने की आदत होती है आपकी, तो उसका कैबिनेट भी प्लास्टिक का ही बना होता है। तो आप इमेजिन करिए इस चीज को। कई बार हम बड़े जोश में आके कहते हैं से नो टू प्लास्टिक। ये मुझे लगता है सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो प्लास्टिक कोई कल्प्रिट नहीं है। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो क्या हम आज मंगल पे जा सकते थे? क्या हम चंद्र मिशन भेज सकते थे? जिन कंपोनेंट्स की का वेट 4 टन 5 टन 5 टन हुआ 6 टन हुआ करता था, उस कंपोनेंट का वेस्ट आज क्लोज में आ गया है। तब हम चांद पे जाने और मंगल पे जाने की कल्पना करना साकार कर रहे हैं।
मतलब 5 टन का पेलोड लेके जाना और 50 किलो या 100 किलो का पेलोड लेके जाना, कितना डिफरेंस होता है। तो मेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के बावजूद मेरा कहना यह रहता है कि डोंट से नो टू प्लास्टिक, से नो फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। हम किसी भी तरह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होने देंगे। जहां से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको नो कहिए, डोंट से नो टू प्लास्टिक। क्योंकि आज की डेट में भौतिक दुनिया में प्लास्टिक के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। और इसमें भी आप देखिए कि सारा का सारा प्लास्टिक, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्लास्टिक हमको दुविधाएं ही दे रहा है, ये कष्ट ही दे रहा है। आप देखिए ये आखिर इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके ऊपर विचार करें आप। आज हमें अगर एक 5 किलो सामान लाने के लिए अपना अगर कॉटन का थैला ले जाना है तो शायद हम जेब में नहीं रख सकते उसको, लेकिन हम 15 किलो सामान लाने के लिए अपनी जेब में चार पॉलीथीन के पैकेट रख सकते हैं। तो ये उसकी मेरिट्स थी, इसलिए हमारी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग बन के आया, इतना ज्यादा उसने हमारी लाइफ को कैप्चर किया। हर मोड़ पे, हर स्टेप पे हमारे सामने प्लास्टिक है और हम प्लास्टिक के बिना शायद हर चीज को संभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुविधा कहाँ हुई, हमने प्लास्टिक का उपयोग इतना ज्यादा शुरू करना किया और हर चीज को यूज एंड थ्रो में कन्वर्ट करते गए, और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल के माध्यम से हमारे किसी ना किसी एनवायरमेंटल कंपोनेंट में चला गया। वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, तीनों जगह ये प्लास्टिक हमारी सोसाइटी में चला गया। तो जब अभी आज जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ स्टडीज की हैं, उससे जो हमें सामने आया है कि जो भी प्लास्टिक हमारा नदियों नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है और समुद्र में जाने के बाद में वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। माइक्रो प्लास्टिक मीन्स ऐसा प्लास्टिक का कण जो 5 मिलीमीटर से छोटा हो जाता है। क्योंकि जब भी ये टाइम के हिसाब से डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन प्लास्टिक की पूरी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो जब ये समुद्र में गया तो ये देखा है यूनाइटेड नेशंस की स्टडी में कि लगभग आप देखें 800 एनिमल स्पेसीज जो कि सी स्पेसीज हैं आज डेंजर जोन में पहुंच गए हैं ड्यू टू प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक। इसी तरह से ये भी स्टडी सामने आई है, यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी कराई जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स ऑफ सी सॉल्ट थे दुनिया के बड़े बड़े देशों से, अमेरिका, चाइना, इंडिया, रसिया, सारी कंट्रीज से इन्होंने इंपॉर्टेंट सी साल्ट के ब्रांड लिए, उनकी स्टडी की और ये देखा 90% सी साल्ट ब्रांड वेयर पॉल्यूटेड बाय द माइक्रोप्लास्टिक्स। तो मतलब ये हुआ कि नमक के माध्यम से ये प्लास्टिक हमारी फूड चेन में चला गया। और आप ये देखिए जब हमारी फूड चेन में कोई चीज जाती है तो हमारे सिस्टम को वो नेचुरली हमारे सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो अगर कल के दिन कोई रिसर्च होता है और ये सामने आता है कि साहब जितने लंग कैंसर हो रहे हैं उसमें 90% के पीछे प्लास्टिक है या माइक्रो प्लास्टिक है, या जितने भी हमारे किडनी कैंसर हो रहे हैं उसमें से 50% किडनी कैंसर इट इज ड्यू टू माइक्रो प्लास्टिक, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक हम अपनी फूड चेन में ले सकते हैं लेकिन एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से उसको आउट नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हमको प्लास्टिक को एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से हटाने की पावर नहीं दी है। तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में ये इकट्ठा होता जाता है और कल के दिन ऐसी सारी रिसर्च आ सकती हैं। ये सिर्फ संभावना है, अभी कोई रिसर्च नहीं हुई इस पे, लेकिन ये संभावना है कि ऐसी भी रिसर्च हो सकती है। और इसीलिए आज जो हम चिंता कर रहे हैं कि साहब प्लास्टिक को हमको कहीं ना कहीं कम करना है, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है, या ऐसे प्लास्टिक जिनकी हम जरूरत नहीं समझते हैं या जिनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी चीजों को अगर हम आउट करने की कोशिश करें तो संभवतः हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन से बचना है, प्लास्टिक बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए शासन ने नियम भी लाए हैं, क्योंकि कोई चीज देखिए जब शासन स्तर पर होती है, और ये भी मान के चलिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में
लोग 90%, 99% होते हैं और तंत्र 1% होता है। अगर कोई नियम हमें लागू करना है तो 1% लोगों के हाथों में वो ताकत होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं, और किसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं? 99% लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। कोई भी तंत्र लोग के ऊपर भारी नहीं हो सकता है। तो अगर किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराना है हमको, तो पहले हमको लोकप्रिय बनाना पड़ेगा उसको। जब तक लोकप्रिय नहीं होगा कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि 2018 में प्रधानमंत्री ने सपना देखा, एक शपथ ली, एक विचार दिया कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करेंगे। तो आप देखिए 4-4.5 साल का टाइम, 4 साल से ज्यादा, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के टाइम पे उन्होंने अपनी ये घोषणा की थी और ये कहा कि 2022 में हम इसको फेज आउट करने के प्रयास करेंगे। तो 1 जुलाई 2022 से हमने रेगुलेशन लेके आए हैं कि साहब अब हमको ये 1 जुलाई 2022 से ये जो हमारे आइडेंटिफाइड आइटम्स हैं इनको बंद करना है। और वो आइडेंटिफाई भी इसी तर्ज पे किए गए हैं, इसी कारण से किए गए हैं कि साहब उसका हमारे पास में अल्टरनेटिव्स इजीली अवेलेबल हैं। इसके पहले हम उसके बिना आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी रहे थे। हमारे पास में ऐसे सिस्टम थे कि उसके जिनको इसने रिप्लेस किया है वो सारे के सारे सिस्टम इन प्लेस हम फिर से ला सकते हैं, उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास में रेगुलेशन में अगर हम देखें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, जिसमें सबसे पहले एक्चुअली वेस्ट को मैनेज करने के तरीके दिए गए, और इसके बाद में सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के बारे में 2019 में भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि कैसे हम उसको फेज आउट कर सकते हैं। इसके बाद में 2021 में, अगस्त 2021 में एक नोटिफिकेशन लेके आए जिसको कहा गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, और इसके माध्यम से हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स को फेज आउट करना है उनको चिन्हित करके सामने ला दिया कि साहब ये प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनको हम फेज आउट करेंगे। लेकिन केवल उनको बंद कर देने से क्या प्लास्टिक की प्रॉब्लम हल हो जाएगी? ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए जो 2016 के रूल में प्रोविजन किया था ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी का, उसको लागू करने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास में नए रूल आए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, और इसमें हमने गाइडलाइंस दी फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी और द प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आप देखें कि स्टेप वाइज ही हम उस पर काम करते आ रहे हैं, क्योंकि बिना कुछ आइटम जो हम आइटम बंद कर सकते हैं हमारे समाज को इफेक्ट किए बिना, उनको हम बंद कर दें। जिनको नहीं बंद कर सकते हैं, जो जरूरी है चलते रहना चाहिए, तो उसका बेस्ट कैसे मैनेज हो उसके लिए तरीके निकालने की जरूरत थी। तो वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से करने के लिए हमने प्रावधान किए और उसके लिए गाइडलाइंस हमारे 2022 में लागू की गई। अब ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 मुझे लगता है सभी ने पढ़े होंगे, सब जानते हैं। इसमें 2-3 मेजर चेंज किए हैं। एक तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनको फेज आउट करना है। दूसरा, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के लिए ये पैरा लागू नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी नियम के अनुसार किसी भी थिकनेस के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंध करने का रेगुलेशन लाया है, और किसी दूसरे नियम के मध्य प्रदेश जैव अनाज अपशिष्ट नियंत्रण अधिनियम 2004 के अंतर्गत इसको लाया है, और नियमानुसार ये किसी भी थिकनेस के हो प्लास्टिक कैरी बैग, वो प्लास्टिक कैरी बैग मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हैं। ये अलग बात है कि वो अभी भी आज भी प्रचलन में है, और वो इसलिए प्रचलन में है क्योंकि अभी तक उसको लॉफुल नहीं किया जा सका है, पूरी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी कोशिश है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और वो निश्चित रूप से प्रावधान लागू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इन नियमों के अंतर्गत, क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस ये नेशन वाइड है, तो मैं कहूंगा कि इसके अभी सितंबर 2021 के बाद से प्लास्टिक कैरी बैग के लिए जो मिनिमम थिकनेस थी प्लास्टिक कैरी बैग की, ये 75 माइक्रोन कर दी गई है, और 31 दिसंबर 2022 के बाद में ये थिकनेस जो हो जाएगी 120 माइक्रोन की हो जाएगी प्लास्टिक
कैरी बैग यूज करने के लिए। इसके साथ साथ एक और प्रोविजन किया, अभी तक हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग को शामिल नहीं किया गया था, और उसका रीजन भी था। रीजन ये था कि उसमें चूंकि प्लास्टिक के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं कि उसको अगर आप कुछ मत करिए, आप अगर 18 महीने 20 महीने रखे भी रहेंगे तो 20 महीने बाद अपने आप अगर आप उसको जरा सा भी खींचेंगे तो टूटना शुरू कर देगा। वो मींस डिसइंटीग्रेशन कैपेसिटी उसमें ज्यादा थी, इसलिए वो पहले शामिल नहीं थे। लेकिन 2021 के रूल में इसको शामिल कर लिया है, और उन्होंने कहा कि इसकी थिकनेस जो है 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। थिकनेस इनडायरेक्ट है, वेट के रूप में मेजर किया है उसको, क्योंकि हर जगह थिकनेस नहीं नापी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि 1 स्क्वायर मीटर का वेट कम से कम 60 ग्राम होना चाहिए। इतना हैवी हमारा नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग का मापदंड होना चाहिए। और इसी रूल में एक शेड्यूल भी डाल दिया गया जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइडेंटिफाई किए गए थे। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अगर हम सिंपल भाषा में कहें, सिंगल यूज प्लास्टिक मींस यूज एंड थ्रो। जो चीज हम यूज करते हैं और यूज करके फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक के आइटम, मतलब हम दोबारा यूज करने की गुंजाइश नहीं रखते उनको। अगर एक प्लेट में किसी ने खाना खा लिया है तो वो प्लेट दोबारा दूसरे के लिए यूजेबल नहीं है, वो फेंकने के लायक ही होती है। एक गिलास में पानी पी लिया अगर किसी ने तो दूसरी बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक चम्मच अगर हमने यूज कर ली तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकती है। तो ये सिंगल यूज आइटम्स हैं, और ये सारे सिंगल यूज आइटम आइडेंटिफाई किए गए और एक समय सीमा तय की गई कि 1 जुलाई 2022 के पहले ये सारे प्रावधान कर लिए जाएंगे कि इसके बाद इनका उपयोग, इनका मैन्युफैक्चरिंग, इनका स्टोरेज, सारा कुछ प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लिया गया है। और ये सारी चीजें अब आप देखें कि ये जितने लगभग 17 आइटम हैं जिनको हमने प्रतिबंधित किया या अमेंडेड किया। जैसे इसमें तो हम देखें तो ये टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक का जितना सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल भी इट इज ए पार्ट ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक, तो जो जितना सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है उसका केवल 18% ये 17 आइटम कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमने अगर सारा का सारा रूल इंप्लीमेंट कर दिया, ये 17 आइटम 100% हमने बंद भी कर दिए, तो केवल 18% सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे चैन से आउट हो जाएगा। 17%। लेकिन 83% सिंगल यूज प्लास्टिक फिर भी प्रचलन में रहेंगे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो बाकी का सिंगल यूज प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए भी हमने प्रावधान लाए हैं। जो दूसरा पार्ट था ईपीआर का, वो ईपीआर के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रावधान किया गया है। तो जो अभी आप ये देखें, द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पॉलीस्ट्रीन एंड एक्सपांडेड पॉलीस्ट्रीन मींस थर्मोकोल। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, प्लास्टिक और थर्मोकोल कि ये 17 आइटम है। ईयरबड्स विद द प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्ट्रीन फॉर डेकोरेशन, मतलब थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, नाइफ्स, स्ट्रॉ, ट्रे एंड रैपिंग फिल्म्स। किसके लिए? स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड और सिगरेट पैकेट्स को पैक करने के लिए रैपिंग फिल्म्स। इन चीजों को बंद किए जाने का निर्णय लिया है। और साथ साथ प्लास्टिक और पीवीसी के बैनर्स जो 100 माइक्रोन से कम थिकनेस के होंगे उनको प्रतिबंधित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं दे कंट्रीब्यूट अराउंड 17 to 18% ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक। तो अगर ये हो जाता है तो हमारे टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक कंट्रीब्यूट्स अराउंड 61% ऑफ द टोटल प्लास्टिक यूज्ड। तो आप देखें कि हम सिर्फ वो 61% का 17% या 18% बंद करने जा रहे हैं, और बाकी के 83% के लिए हम ईपीआर के प्रोविजंस लागू कर रहे हैं, जिससे कि उसका कलेक्शन और सेग्रीगेशन मैकेनिज्म या उसको जो उसकी सही प्लेस है, जहां पे वो मिसप्लेस्ड पड़ा हुआ है, उसको सही प्लेस पे लाने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार करेंगे, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी।
आप देखें कि हमने ये जब नियम लागू करना है 1 जुलाई 2022 से हमारे यहाँ नियम लागू हो जाएंगे, तो इसके लिए अभी तक जो हमने किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेस्ट जनरेशन एंड क्वांटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स, इंपोर्टर्स एंड वेस्ट प्रोसेसर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट्स का भी आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी कार्रवाई की है, जिसमें से हमारे मेजर जो पोर्शन है रिसाइकलिंग में, और उसके बाद में को प्रोसेसिंग इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज और यूटिलाइजेशन इन द रोड कंस्ट्रक्शन। ये 3 मैकेनिज्म हमने डेवलप किए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पे मेजर प्लास्टिक यूज या प्लास्टिक वेस्ट उपयोग होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन हमारे रूल में दिया हुआ है, किसके लिए? प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर, इंपोर्टर्स और वेस्ट प्रोसेसर्स के लिए। लेकिन हमने एक और यहाँ पे एडिशनल काम भी किया है। हमने कहा कि जो भी एजेंसीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेस्ट मैनेजर्स या ईपीआर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, तो अभी क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें टाउन्स बड़े छोटे छोटे हैं, क्वांटम ऑफ वेस्ट काफी कम होता है। 2-3 शहरों को छोड़ दें तो सारे के सारे हमारे शहर जो हैं 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले ही होते हैं, और अधिकतम शहर तो हमारे 50,000 पॉपुलेशन के, 25,000 पॉपुलेशन के, 30,000 पॉपुलेशन के हैं। तो क्या होता था कि ईपीआर के तहत जब पैन इंडिया पीआरओ हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, काम करते थे दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, जहां पे उनको एक कॉर्नर में जाके 50 टन प्लास्टिक मिल जाएगा, ऐसी जगह काम करते थे और पूरे कंट्री की ईपीआर को पूरा कर देते थे। तो मध्य प्रदेश ने एक डिसीजन लिया कि नहीं साहब, ये काम तो नहीं चलेगा। आप मध्य प्रदेश में काम करना चाहते हैं अगर, देन यू हैव टू हैव फैसिलिटीज इन मध्य प्रदेश। आपको हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में सब जगह से प्लास्टिक उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि साहब हम यहाँ पे ईपीआर के तहत पीआरओ के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी हमने चालू की, और सरकार ने कहा कि आपको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए प्री क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश में होना कंपलसरी है। क्योंकि जब आप हमारे यहाँ से उठाएंगे, आपको कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है तो आप नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि एक आदमी पुणे में बैठा हुआ है, यहाँ पर रैक पिकर्स को मैनेज नहीं कर सकता है वो। तो क्या करता था, यहाँ के इंडस्ट्री से उठा के, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है प्लास्टिक का, वो उठा के और यहाँ के ईपीआर में डाल देता था। दूसरी प्री क्वालिफिकेशन ये है कि द प्लास्टिक वेस्ट प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट will not be eligible for the credit of the EPR। आप इंडस्ट्रियल प्लास्टिक को उठा के ईपीआर की क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आपको वेस्ट से ही या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ही प्लास्टिक उठाना पड़ेगा। आपने कहा साहब कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, वो उठा के वहां से 50 टन प्लास्टिक उठाया, आपने कहा साहब मैंने 50 टन इकट्ठा कर लिया, आपने वहां से भी पैसे ले लिए और यहाँ से भी पैसे ले लिए। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमने वहां पे उनको वेन किया कि साहब इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट will not be counted as for the credit of the EPR। पटेल सर, आप बहुत बेहतरीन पॉइंट शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे एक स्पीकर हैं, उनको एक मीटिंग में जाना है, तो उनको सुन के मैं चाह रहा हूँ कि हम इंटरेक्शन को कंटिन्यू करें। आप थोड़ा सा अगर आप मैं 1 बजे तक हूँ। हाँ, तो अभी टाइम है सर। नहीं, मैं 1 बजे तक हूँ। जी। हमारे साथ रिया सिंघल जी हैं। So Kamal, if we can hear her for a couple of minutes, then we'll come back to. Hello. Welcome, Riya. Good afternoon. Thank you, Kamal. Thank you, Akram. It's an honor to be a part of this program, and it's great to be having this conversation. This is a challenge, I think, as a country that we certainly need to tackle, and it's great to see that it is now becoming a priority. I understand that it is not always possible to avoid single-use plastic. I also understand that it is not always possible to avoid plastic completely. So as an entrepreneur, my fellow panelists have talked about, accountability as citizens as well. And that's what I started when I became an entrepreneur in 2009.
I founded my company EcoWare. EcoWare is India's first and largest sustainable packaging company. We use the waste of common agricultural crops such as wheat, rice, and sugarcane, and we convert it into packaging for the food and beverage industry, right? So typically plates, bowls, cups, takeaway packaging, and we displace the single-use plastic. So what we're doing is two things. One, we are displacing single-use plastic. Two, our raw material is typically, like I said, agricultural waste. And if anyone lives in Delhi or is familiar with the pollution in North India, instead of farmers burning waste, this is what we have brought value to, and we use this waste and convert it into packaging. Now, the idea behind EcoWare is that one, it is a safe product for us, for our children, for our community. It does not change the nutritional value of the food that you put in it. And also, it does not sit in the landfill forever, right? We all know that plastic items are going to outlive us, our children, and generations to come. If you dig a pit in soil, and you put EcoWare or any of our products in there and you cover it with soil, it breaks down into soil in a period of 90 days. So this is not going to sit in a landfill. It does not require waste segregation, which unfortunately we do not have in this country, at least formal waste segregation. And the systems that are required to manage the waste that is created by a population as large as ours. We also do not have industrial composting facilities. We also know that only 9% of plastic packaging globally, according to the UN, is recycled. So, like I said, the beauty of EcoWare it keeps your food safe, and it naturally biodegrades and composts. It does not require any sort of. It doesn't require any formal. It doesn't rely on any formal waste management. It's completely certified from CIPET to the USDA, which is the United States Department of Agriculture, BPI, TUV, Singapore Green Label. Every claim that we make on our product is backed by certification. All right, it is very important because we want to be seen as a genuine solution. There is a lot of greenwash that comes out in the market every time. Even a state has a plastic ban. We just bring things out. We must focus, and whatever we bring out must be a closed loop solution. We must think of the life cycle cost, the end of life of the product, and make sure that we are not only manufacturing responsibly, we are selling responsibly, and we are disposing responsibly. We also have a responsibility towards all our stakeholders. When I started this company in 2009, it was much before any Swachh Bharat campaign. None of my stakeholders understood what biodegradable or compostable meant, right? We created a brand new product at a new price point, and we have created a market. We created an industry that never existed before. And it has taken a lot of time, and we've invested a lot of efforts in education and creating awareness from schools, from colleges. We work from hospitals. We've engaged with community. And I think that considering we are one of the largest populations in the world, we obviously have to spend a lot more time educating people, because I strongly believe that when someone is educated on the choice that they make, it is a lifelong choice versus a plastic ban that comes in and it is forced upon you, right? We are all individuals. We all behave differently when we understand why we need to behave differently. I'm proud to say that EcoWare is an affordable, it is an accessible and a scalable solution. Our customers include the Indian Railways. They include a Haldiram's, a Subway, a Cinnabon. We work with large-scale office canteens, college campuses. We sell on Amazon, on our own website, which is ecoware.in. We've worked with zero waste events, with airlines, and we retail, from Kashmir all the way down to Kerala and 16 countries globally. I'm very proud of the impact that we have created. The previous gentleman who spoke talked about measurement. We've displaced over a billion pieces of single-use plastic in our journey with compostable solutions. Okay, 100% of our revenue is derived from a circular economy model. We've, like I said, created an industry that never existed before. We have a team of 120 people, out of which 30% are women. I was fortunate to receive the Nari Shakti Puraskar from the President for my efforts and my commitment towards fighting plastic in India. And we are committed to scaling our impact. We are committed to creating more jobs across the country.
we want to displace as much single-use plastic as we can, not just in food and beverage, but we are now doing this across industries. So e-commerce industry, medical industry. Let us not forget that COVID has increased the use of single-use. Everyone now thinks that single-use means hygiene. And we don't want to infuse more plastic into the environment when there are better alternatives available. So thank you for your time and giving me the opportunity to speak. Thank you, Ria. It's really nice to know your organization bringing out to be a part of a solution. So since today morning we were looking at, we have a lot of problems. Where is the solution? So entrepreneurs like you are basically driving the agenda in the right direction by offering the products which would replace some portion of single use, if I may say. And the kind of notification we have, which is mostly commonly, addressing the cutlery and all these things. So I think your organization have a big role to play. Thank you, Kamalji. I think we are very aligned to our Prime Minister's vision of waste to wealth. I hope that this movement towards eradicating single-use plastic helps reduce things like GST on products such as ours, just to help make it more affordable. I hope that we, and I think that whatever legislation, etc., we come out with, I hope that as manufacturers, as traders, as whoever, we are taking the responsibility to bring out the right things and that things that are certified ultimately. Yeah. Thank you. So there are a lot of apprehension also in the market on the certification part, as you just rightly mentioned. So, you are right that we are living in an ecosystem where any second entrepreneur is basically claiming their products to be biodegradable or compostable, although these two things are very different. And we also need to see that the products that we use as replacing the single use, they are not actually contributing to microplastics in the environment. I mean, they have to compost fully. Composting means, but there are products who are being sold as if they are being biodegradable, but they are leading to more microplastics in the environment and at a very higher pace. Yeah. I think that's what I said. I think education awareness is very important from a consumer level, from a manufacturer level, and I think that we need to bring out certification industry standards. EcoWare is seen as an industry leader. Like I said, we've innovated with the Indian Railways to create, products that are bespoke to them to help get rid of aluminum trays. We're seen as a powerhouse of innovation because we bring authenticity to the table. And assurance also that that you've engaged with the right person, you are using the right product. And I think that's very important. I just wanted to ask us a question related to the standardization of, bringing out some IS standards around this part of, ecosystem. So what is your take? How, and if I may, would like to know where we are in terms of standardization. Where do you see the role of government or organization like you putting the right set of, knowledge to government that hey, look at, you need to have these kind of standards. So where we are as India. Over to you. So I honestly, you have to excuse my honesty. I think as an entrepreneur, I will tell you, and someone who has been in this industry and fought to create this industry for so long, and that there is, unfortunately, jugaad is loved by our country. And I have steered away from it. When I started, there was no standard at all. And we invested, and it takes a lot. It's a conscious decision, right? As a business, as a small enterprise, to say, I'm going to invest in certification that costs an X amount, and we've gone to foreign labs, global labs, to meet those global standards, to bring assurance behind the brand, to build a brand. I think as India, we really need to do a lot more to make sure that we are not creating more waste. We've seen the Ghazipur landfill set on ablaze, twice this week, 3 times this week. And the last thing I want is for a plastic ban or a notification to bring out
the wrong products. So I think, like I said, along with defining what is not allowed, I think we must define what is allowed. And what, and that's right. And I think every citizen as a consumer, you should have that, right? You should have labeling on products, right? When you go abroad, there are certain icons, there are certain things, as a consumer, when you walk into a supermarket, what to look for, what is a good sign, what is a bad sign, you can differentiate. And I think those are the kind of things that we need to also bring out in India for all consumers. It's not just about, a QSR saying, okay, do you have an FSSAI certification? It is me as a mother saying, I don't know what plate to buy when I go to a shop because there are 10 different options. What is true? What isn't? I think platforms like this, where you have a lot more conversations, I think we need to start vocalizing. We need to start engaging with community as well. And I think that, to answer your question very simply, we have a long way to go as far as standardization is concerned. Currently, the only thing we have is the CPET certification. Thank you. Thank you, Ria. It was really nice to host you for this session today, and you really brought out the pertinent, enablers that we all need to look at when it comes to using these products. You have to list of what is allowed. You have to give consumer the choice and also the information that so that he can, use his concise to have a right kind of. So thank you so much for joining in, and we would keep organizing these sessions, and we would host you. Thank you. All right. This time you're in a hurry, but next time. Thank you so much. I look forward to engaging with you in the future. Thank you. Thank you. Thank you. We have around 3 minutes. Quickly, I will go back to Mr. Patel. Mr. Patel, are you there? Mr. Patel has actually left. So he has another meeting from 1 o'clock. So he has another meeting. Now we have Anurag. Okay. So we can hear Anurag, sir. Okay. Thank you. So I would like to invite now Mr. Anurag Tiwari, co-founder of Recard. Anurag, you can switch on your video. Yeah. Thank you so much. Back. Thank you. Good to see you. Welcome to the session, Anurag ji. So अभी आज हम लोग पूरे दिन से काफी डिटेल में चर्चा हुई है, और अगर मोटा मोटी समझे तो सभी स्टेक होल्डर्स 3 बातों पे एग्री कर रहे हैं. वन इज दैट एक तो मिस्टर पटेल की बात बड़ी अच्छी लगी. उन्होंने बड़े अच्छे से लोकतंत्र को जिस तरीके से डिफाइन किया कि तंत्र 1% है और लोग जो है वो 99% है, और वो तंत्र 99% को गवर्न करेगा. सो वी हैव टू हैव पॉलिसीज व्हिच आर लोकप्रिय. So then only Loktantra would function, and we would have, it's a very beautiful articulation that he had done. Second point, so this everyone agreed that yes, we need to have policies which are giving alternates to the consumers. We need to have policies which are implementable, and also, but yes, we have a task. We have to phase out single use. There would be some, ups and downs, but definitely, as we all agree that when we Indians decide something, we get it done. So from 1st of July, we would make our best efforts to live up to these expectations, so that our future generations, they don't, say that our forefathers had polluted the soil with so much of microplastic that we can't even think about healthy food and healthy air and healthy water. So that is second point. Third point was about implementation related challenges, where we need to bring in technology, we need to bring in everything. But one thing is very consistent, is that segregation of waste at source. If we are able to do this, then nothing like it. And there are a lot of initiatives being undertaken for IEC activities by municipal corporations, by State Pollution Control Board, by industry, but we all need to speak in a common voice, and we need to leverage each other's efforts. Now, I would look to you in terms of as a person who is leading one of the
WMA, Waste Management Agencies, who has considerable experience in terms of plastic waste collection and channelization. How do you see that, the alternate packaging, which is, if we are trying to talk about it, and alternate packaging, which is going to replace some of the single use. What is your experience? You have been working on the ground. How do you find these policies to be more implementable, if I may say? What are the things that you would pick up? Any 2 or 3 major points from this? Thank you so much. Thank you, Kamal ji. मैं पहले शुक्रिया करूंगा वीकेयर का और पॉलिसी टाइम्स का, जिन्होंने ये पॉलिसी डायलॉग शुरू किया और ये पूरी सीरीज पूरे देश को कवर किया. आज हम ईस्टर्न रीजन को कवर कर रहे हैं और हमने पूरा देश कवर किया. ऑलमोस्ट हर स्टेक होल्डर का टच बेस हुआ. हर वो लीडर जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कंट्री में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के या फिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए, आपने हर उस पहलू, हर उस व्यक्ति, हर उस एफर्ट को रिकग्निशन दिया. और इस सीरीज में पूरा बैलेंस सीरीज रहा. हर एक को मौका मिला अपनी बात रखने का. हमने चाहे इस सेशन में एमएल पटेल साहब हो या फिर मैम जो इकोवेयर से थी, या पहले सेशंस में हमने बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटीज जिनके एफर्ट्स के रिजल्ट आए उनको हमने रिकग्निशन दिया. एक बैलेंस्ड वर्किंग रहा. प्लस में वीकेयर के वो सारे ब्रांड्स जो एक्चुअल में वो एनर्जी है पूरे इस एफर्ट्स के पीछे, उन सबका शुक्रिया. हमने उन सब ब्रांड्स को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हुए देखा, उनके साथ भी काम किया और उन्हीं सारे ब्रांड्स के एफर्ट्स, उन सब ब्रांड्स के कलेक्शन और रिसाइकलिंग के टारगेट्स और अचीवमेंट्स और उनकी कमिटमेंट, उनके टाइम, एनर्जी, मनी के इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे आज ये रिजल्ट है कि हम 31st ऑफ हम किसी तारीख को तय कर पा रहे हैं और तय कह पा रहे हैं इस तारीख को अपना प्लास्टिक वेस्ट का, सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को हम इनिशिएट करेंगे कंट्री वाइड. सो अगर ये ब्रांड ओनर्स का एफर्ट नहीं होता या फिर ब्रांड ओनर्स इस प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो शायद सरकार भी वो इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल महसूस करती. तो गवर्नमेंट की अपेक्षाएं और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन, सबका एक मिला जुला, एक सबका एक जॉइंट एफर्ट के रिजल्ट के रूप में हम जुलाई 22 2022 में हम देखेंगे. हम शुक्रिया करेंगे पॉलिसी टाइम्स के लिए भी, जिन्होंने हर स्टेक होल्डर को बड़े सम्मान के साथ बुलाया और उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया कि क्या वो अपनी बात रख सके इस सीरीज के रूप में. चाहे वो कमिश्नर्स को इन्वॉल्व करना हो या मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करना हो या पॉलिसी मेकर्स को इन्वॉल्व करना हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना हो. आपका, कमल जी और अकरम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. रही बात हमारे अनुभव की इस पूरे एफर्ट्स में, अगर 4 सालों में डिस्कशन यहाँ पहुंचा कि हम एक तारीख तय कर पाए जिस तारीख से प्लास्टिक वेस्ट में पर्टिकुलर लिस्टेड आइटम्स बैन होंगी जो सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में जिसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, तो वो 4 साल की डिस्कशन और इन सारे स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट के बेसिस पे ही वो अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हो पाए हैं. अगर वो सीरीज 4 साल नहीं चलती या डिस्कशन 4 साल नहीं चलता और शायद 4 महीने में हम ये तय करते तो आज हम वो रिजल्ट नहीं, हम वो तारीख को सत्यार्थ नहीं कर पाते, हम उसको जस्टिफाइड टाइम नहीं देते तो फिर वो रिजल्ट भी नहीं आते. यस, ग्राउंड इज, हमें वो रिजल्ट मिल रहे हैं उस धरातल पे इस पूरे एफर्ट्स की वजह से. पिछले साल में सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से ब्रांड ओनर्स ने 7.5 लाख टन 7,50,000 टन का कमिटमेंट दिया और लगभग सबने पूरा किया. बहुत सारी कंपनीज हैं जो, चाहे डाबर इंडिया हो या प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, या बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी के रूप में, प्लास्टिक पैकेजिंग न्यूट्रल कंपनी के रूप में अपने आप को घोषित किया इस पिछले 1 हफ्ते में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन लोगों ने जो कमिटमेंट लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स के साथ कंट्रीब्यूट करने का, वो उन्होंने पूरा किया. और इस साल में जो भी पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली वैसी हैं जैसी रिक्वायर्ड थी और अब उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए हम और बड़े एफर्ट्स और बड़े रिजल्ट्स के ऊपर शायद अगले साल बात कर रहे होंगे जब आप नेक्स्ट सीरीज ऑफ वर्किंग शुरू करेंगे. यस, अल्टरनेट पैकेजिंग रिक्वायर्ड थी, उस पर काम हो रहा है. कुछ चीजों पे
अल्टरनेट यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक पे रिजल्ट हैं, जैसे नाम थी इकोवेयर से। बहुत सारी चीजों पे पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन से पहले पॉलिसी का क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट था, जो अभी लेटेस्ट पिछले कुछ महीनों में ही आया है और उसका रिजल्ट अगले कुछ महीनों में होगा। शायद अगली बार आप और कमल जी किसी बड़े इन सारे सीरीज में होंगे, डायलॉग्स में होंगे, तो हम वो बोल सकेंगे कि यस वो रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया था अप्रैल 2022 में वो अपने को मिल रहा है। सो यस, इट इज टेकिंग टाइम एंड इट इज अ वेरी बिग इकोसिस्टम। बहुत बड़े इकोसिस्टम में छोटे छोटे शुरुआत से ही बड़ी बड़े चेंजेस आते हैं और हमारी वो छोटी शुरुआत हो चुकी है, चाहे आपके एफर्ट से या ब्रांड ओनर्स के एफर्ट से या रिकार्ड ने जो पिछले साल में 1,55,000 टन कलेक्शन और रिसाइकलिंग किया आप सबके साथ मिलके, उसके एफर्ट से। मेरा सबमिशन सर। आप म्यूट हैं सर। Thank you Anurag ji. You very well brought out the, so first of all, thank you for your kind words. We are just doing our bit, and that's what have been the flavor of the day, that whatever we can do as organizations, as individuals, that is what we need to focus on, and we have to ensure that we are moving in a right direction, in a common direction. We are not moving in separate directions. So that's the role that WeCare Policy Dialogue Series as a product, when we brought out, when we ideated with our members, we thought that we should bring out a platform where we can have the stakeholders coming together. We can have policymakers, practitioners like you, industry, to come together and carve out a clear road ahead, and we move forward in a very informed manner. So I think we have been able to contribute to some extent, and I would like to thank all the governing body members of WeCare, Dr. Atul Sood, President of WeCare, Ms. Nigda Mehta, Vice President of WeCare, Ms. Juhi Gupta, who is a Secretary of WeCare, and Mr. Tushar Ranjan Patnaik, who is the Treasurer of WeCare. And along with that, there are 17 founding members of WeCare. You have heard from ITC. Similarly, we have other leading brands like Kevin Care, Nestle, PepsiCo, Perfetti, DS Group, Dabur, and many more. So all the members who have been guiding us to take the words of the industry and to bring the viewpoints from multiple stakeholders in order to have a better implementation of EPR, have a better ecosystem for plastic waste to be channelized to a useful resource. So we thank each one of our members for that, and we are hopeful that we will continue this journey. We will continue bringing out more and more valuable and value-based products, services to all the stakeholders. With this, I thank each one of the panelists who have joined us today, all the dignitaries, political leadership, bureaucracy, State Pollution Control Board, the waste management agencies, our partners specifically. So we have got leading WMA that are our partners for organizing this web series. Recard is one of them. We have Re-Sustainability Ramkey. We have Mishra Traders, IPCA, GEM Enviro. So we thank each one of them for their contribution and be a helping hand for organizing this. And last but not the least, my friend Akram from the Policy Times. He is leading one of the media agency in the name of Policy Times. He has a strong research team who does all that. And when people listens to him speaking on plastics, they think he's a very thought leader. And I give that credit to his research team who gives him a lot of insights. So thank you, Akram, for being a part of this
whole journey that we completed in the last 3 months. You have been always on the toes, chairing the panelists, speakers. Akram has been a great support to WeCare when it comes to organizing this kind of a conference. So and last but yes, to all our viewers who have been watching us live. There are viewers who have been consistently following us through social media. They have been participating in consistently through our regional workshops. We can see them. Thanks to each one of them, and that's all from my side. Over to Akram. Thank you. Thank you so much, Kamal. It's only because of your focus, mission, and commitment that we could pull out such a long series. I think this is one of our first such series we did covered across India. We have never thought that we'll be successfully doing it like the way we have finished it. I'm so happy that our partners, our members are very happy. So when you proposed and we discussed, I was really, though I was confident that we'll be able to do it, but I was also a little hesitant that how things will go. Because in engaging and involving different stakeholders from different part of the country is always a little challenging. But I think the biggest magic that worked with us is that important stakeholders are very serious about this issue. And all our stakeholders, whether they are urban local bodies, whether especially the state pollution control boards, I have seen them extremely serious about this matter, and they really want to do something in their own respective state. And that is why there has been massive participation and contribution, especially Sikkim Pollution Control Board, Madhya Pradesh Pollution Control Board, and many other pollution control boards who joined us. I felt that they are really serious to execute what central government has taken as a policy initiative. And this, not only within India, actually this has created huge impact across the globe. And since last couple of months, I have been seeing world's leading environmentalists or leading plastic waste management gurus or experts are coming and traveling to India, to different part of the states or regions, and they're trying to do advocacy. They're trying to do different kind of collaboration, partnership, and a lot of now recently I saw a lot of European stakeholders came to India, and they want to really extend their support and partnership to India. So in one way, this also means that due to this policy changes, a huge business potential is emerging. And that is why the whole world is putting huge focus to India. On the other hand, I think India's voice globally has become more powerful than ever before. That also is one of the reasons that the whole world is putting enough attention, especially when I saw that World Economic Forum, did a huge kind of focus and paid huge attention towards building India's plastic waste management infrastructure. So we did a lot of discussions. I will not repeat a lot of discussions which have been done. Awareness. This conference was one of the most successful initiatives in terms of creating engagement. So we have been pretty much successful in engaging different stakeholders, regional stakeholders. Awareness, yes, we did, I think, very successfully. We involved a lot of education institutions, a lot of other think tank level stakeholders, NGO level stakeholders across the nation. And also we have been pretty much able to successful to bring some solution providers. As we saw, most of our WMA and plastic recyclers are already solution providers. And with them, we saw many solution providers who came. So awareness, engagement, and advocacy, we have done, I think, a decent amount of. So now, our another success we wanted to have is central and state governments' engagement in the whole ecosystem. And maybe one day we will achieve that. And though the job and message is already gone, but we wanted that voice in the platform. But hopefully in future we will have that. So our aim always was to involve industry, academia, civil society, international groups or international community,
which where we have pretty much able to be done in this whole series. And I, as you thanked every stakeholder, I'm really happy that all of you came forward and supported us. But this is not the end of journey. WeCare has a lot in plan, and so is the Policy Times. So we will do a lot of other important programs to continue our advocacy, thought leadership in the space, but also to bring real contribution on ground. Our recycling partners, WMA partners are there, they're doing their bit. We will do our bit in the system, because this is a nation of 135 crore population, and hence not by one member or 10 members contribution would be enough to make enough change in the country. And we will continue our effort in bringing whatever value addition that we can do. I think with this, I thank everyone for your outstanding, tremendous, tireless, consistent support to make this massive success. Come on. Thank you. Thank you. And with this, we hereby close our Eastern Region Conference today. And this was the last one in our series. But stay tuned. Please subscribe to WeCare LinkedIn channel and Twitter handle. And you would continue to get updates about all our future projects, endeavors. Thank you. Thank you. Thank you, Anurag sir, for being with us from your busy schedule. I understand that your father is in hospital, and we pray for your father for speedy recovery, and may the Almighty be pleased with him. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, same from our side. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much. All the viewers, we will be in touch with you and keep sharing the information, the work that we do. Thank you.